Hi, good afternoon, all of you. Can you guys hear me? Please let me know if you all can hear me. All right, good afternoon, guys. I hope all of you are doing well and preparing good. Can you guys just a minute? Just hold on for a second. Yes. So in this lecture, we are gonna revise legal PYQ. Let me first introduce myself. My name is Shashank Sahai. I'm alumni of Gujarat National Law University, and I'm the author of Legal PYQ, the book which is published by Clat Possible. I'm pretty sure that you must have at least gone through that book. As you all know, legal PYQ, especially the previous year question in legal section, plays a very important role. What we have seen from past 7-8 years, or more than that, that the question which CLAT has consistently asked was more or less based on previous year questions. In 2020, the CLAT pattern changed, and most of the students were quite worried that what will happen in that year's exam. But even in that year, the questions were more or less based on the previous year question paper, right? So without delaying it further, let's straight dive into it. So in this class, we are going to start with CLAT 2020 paper, Legal PYQ. Let me show you the passage first. All of you can see my screen. Guys, kindly go through the passage. So this passage is on contracts. The COVID-19 pandemic has taken the entire world hostage in less than 4 months, and the global economy has been hit the hardest, with governments across the globe implementing stringent policies, including lockdown, to control the coronavirus outbreak. The pandemic today presents unprecedented challenges and impediments to businesses in conducting their normal operations. The lockdown across the world has caused delays in the performance of contracts and transactions. Now, the question that arises is whether the current situation can enable parties to a contract to alter their obligations with non-compliance of terms, neither being regarded as a default committed by any party nor a breach of contract. There are certain well-accepted practices for dealing with such extraordinary situations in commercial transactions by the inclusion of force majeure and material adverse effect clauses. Now, force majeure, have you guys heard about this particular term in contract? Anyone in class who can write it down and write down the meaning of this particular term in the comment section? Come on, guys, kindly write it in the comment section. What is the meaning of force majeure? Have you heard about act of God? Is it similar to act of God? All right, I'll explain it to you. Let us first complete the passage. Determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential. Provisions of force majeure often cover natural disasters like hurricanes, floods, and earthquakes as acts of God. Other covered events may include war, terrorism, civil disorder, fire, disease, medical epidemics, or by reasons of applicable laws or regulations. Broadly, the courts have interpreted the term force majeure as an event that can neither be anticipated nor controlled by either of the contracting parties. A force majeure clause applies in the context of ongoing contractual arrangements, whereas an MAE or material adverse change clause applies to the allocation of risk in transactions before their closure or completion. Next, pandemic and related consequences, such as government action, is a type of event covered by a force majeure clause. However, its impact on the affected parties
party's ability to perform its contractual obligations may vary depending upon contractual terms. It is common for force majeure clauses to specify the impact that the event or circumstances in question must have. In order for the clause to be triggered, references may be made, for example, to the event or circumstances having prevented, hindered, or delayed performance. These terms require different levels of impact on performance before a party can claim recourse to the clauses. In other words, the force majeure and MAC clauses act as an exception to what would otherwise be treated as a breach of contract. Shall I move on to the next slide? Yes, Aditya, Asad, Kajal, all of you are right. It is very similar to act of God. Now, this is the last slide of the passage. Let's read it, guys. Certain contracts may state that if a force majeure clause is applied, the contract may automatically be terminated. On the other hand, some contracts may even state that the duty to fulfill the contractual obligation may be suspended for a certain period of time, and if the force majeure event is not curbed or treated even after such time, then eventually the contract may be terminated. Though there cannot be a one-size-fits-all solution to this question, and it depends upon how the force majeure clause is worded in a specific contract, and in the absence of the same, applicable laws related to the same will be required to be taken into consideration. Now, see, let me dissect the passage, and let me tell you how I would have proceeded with the passage, even if I was not aware of this particular term called force measure. देखो दोस्तों, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपने पहले फोर्स मेजर के बारे में पहले से पढ़ा था, आपको पता है कि फोर्स मेजर क्या होता है, और जैसे ही आपने ये पैसेज देखा, आपको लगा कि यार चलो इतने अच्छे से तैयारी की थी, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने कर रखा था और अब इस पे पैसेज आ गया, आई एम गोना नील डाउन ऑल द क्वेश्चंस। दिस कैन हैपन और दिस मे नॉट हैपन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे अभी देख रहे हैं, उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको फोर्स मेजर के बारे में नहीं पता था, लेकिन पैसेज जो है, जैसे कि क्लैट कहता है कि पैसेज में आपको सारे लीगल प्रिंसिपल्स दिए रहेंगे। आपका ये काम है कि आप उन सारे लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करो और एक गिवन फैक्चुअल सिचुएशन में उसको अप्लाई करके बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। बेस्ट ऑप्शन कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? बेस्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे बाय एलिमिनेटिंग सिमिलर ऑप्शंस जो कि सही हो भी सकते। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेंटेंसेस है, मैं पहले वो आउटलाइन कर देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान देना। Non-compliance of terms neither being regarded as default committed by any party nor breach of contract। तो फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो ऐसा होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को कंप्लाई नहीं भी कर रहे हो, तो भी उस केस में आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से वो बचा सकता है। उस सिचुएशन में अगर फोर्स मेजर क्लॉज एक्टिवेट हो गया, तो उस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप बच सकते हो, एक पार्टी बच सकता है, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट, फोर्स मेजर होता क्या है, ये वाला पार्ट आप पढ़ो, ठीक है? Determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential। कौन कौन सा है? Provision of force majeure often covers natural disaster। अब इसमें act of God से related जो भी है, जो आपने टॉर्ट्स में पढ़ा था act of God, या कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था आपने act of God, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर देता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको पार्टीज अवॉइड कर सकते हैं, राइट? फोर्स मेजर इज सिमिलर टू इट। इसमें क्या क्या आ गया? हेरिकेन्स आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, राइट? लैंडस्लाइड्स आ सकता है, इस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन आ सकता है। और दूसरा जो पार्ट होता है फोर्स मेजर का, वो होता है वॉर, टेररिज्म, सिविल डिसऑर्डर, फायर और इस टाइप की चीजें। मान लो अगर इंडस्ट्री में जहाँ पे काम चल रहा था वहां अचानक से आग लग गई, या वहां पे पूरे सिटी में राइट हो गया और पूरे महीने भर तक सिटी में सेक्शन 144 लग गया, जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री में आ ही नहीं पाए, तो क्या उस केस में फोर्स मेजर एक्टिवेट होगा? द आंसर इज यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड एंड फोर्स मेजर? फोर्स मेजर जो है दैट इज अ ब्रॉडर टर्म। फोर्स मेजर के अंदर में कुछ मैन मेड कैलेमिटीज भी आते हैं, ठीक है? एक्ट ऑफ गॉड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं। तो देखो पैसेज में ये चीज बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि फोर्स मेजर के अंदर एक्ट ऑफ गॉड भी है और फोर्स मेजर के अंदर मैन मेड कैलेमिटीज भी है।
राइट? डिजीज, मेडिकल, एपिडेमिक्स, तो एपिडेमिक्स के अंदर पे कोविड भी आ गया, ऑल राइट। अब यहाँ मटेरियल एडवर्स चेंज जो है, मटेरियल एडवर्स चेंज के बारे में भी इसने बताया है। क्लॉज अप्लाइज टू द एलोकेशन ऑफ रिस्क इन ट्रांजेक्शंस बिफोर देयर क्लोजर और कंप्लीशन, ठीक है, ऑल राइट। सबने इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दिया है। मैं क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि पैसेज के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो लीगल प्रिंसिपल छुपे हुए रहते हैं पैसेज पे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एंड हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई देम इन अ गिवन फैक्चुअल सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, रेफरेंसेस में बी मेड फॉर एग्जाम्पल टू प्रिवेंट uh, for example, to the event or circumstances having prevented, hindered, or delayed a performance, right? These terms require different levels of impact on performance before a party can claim recourse. ठीक है, यहाँ ये भी क्लियर है, सेम चीज को ही कह रहा है। अब ये पार्ट क्लियरली कह रहा है कि जहां फोर्स मेजर एक्टिवेट हो गया, जहां ये पर्टिकुलर क्लॉज अप्लाई हो गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। नाउ लेट अस move on to the question section. This is the first question, guys. Now, please read the question and answer it. Meanwhile, let me go through your comments. And if you have any difficulty in going through the slide, या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो. आई एम गोइंग थ्रू योर कमेंट्स राइट नाउ. All right, my voice is breaking. Some students are saying this. Is my voice better now? Siddhant, is my voice better? Please write it in the comment section. Alright, based on the author's argument, I think इतना टाइम मैंने आपको दिया है कि most of the students ने क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर जो है वो कमेंट पे लिख दिया होगा. So now let me dissect the question. But before that, आदित्य प्लीज आप अपने आंसर को एक बार फिर से, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करो. आपका आंसर जो है गलत है. अदीशा, सिंधुजा, देन जानवी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, बहुत अच्छा नाम है आपका. आपका आंसर गलत है, वैसे आप एक बार फिर से अटेम्प्ट करो. अनुष्का, इन सारे स्टूडेंट्स का जो है वो आंसर सही है. मनु, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट. नाउ लेट मी स्टार्ट विद let me read the question. Based on the author's argument and passage above, which of the following is correct? First option, force majeure clauses generally have a uniform impact on the performance of contracts in all the cases. ठीक है, क्या ऐसा होता है guys? ये ऑप्शन क्या कह रहा है? Force majeure clauses generally have a uniform impact on the performance of contracts in all the cases. सारे cases में क्या uniform impact होता है? The answer is no. ठीक है, ओनली इन सर्टेन केसेस इसका जो इम्पैक्ट है वो होगा, राइट. किस टाइप के केसेस में? जहां एक्ट ऑफ गॉड है, जहां पे मैन मेड कैलमिटीज हैं, उस तरह के केसेस में. द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजर्स ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज इज डिपेंडेंट अपॉन द वे सच क्लॉजेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स फोर्स मेजर का जो है वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन मतलब एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन दिया गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं आपको पैसेज का वो पार्ट बताऊंगा. एक मिनट. Both force measure and material adverse change clauses have similar impact on the performance of contract. क्या ये ऑप्शन सी इज करेक्ट? The answer is no. Material adverse change का जो है वो अलग इम्पैक्ट होता है. फोर्स मेजर जो है वो सीधा का सीधा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है. ऑल ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट. नाउ let us go back to the passage and see कि ये पार्ट कहाँ पे दिया गया है. anyone in class, anyone who can tell me? Please point out the relevant portion.
Just a minute. Guys, please read it. Pandemic and related consequences such as government action is a type of event covered by a force majeure clause. However, please pay attention here. However, its impact on the affected party's ability to perform its contractual obligation may vary depending upon contractual terms. So this means the way force majeure clause has been defined, that will determine how what will be the impact of force majeure clause in that particular case. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फोर्स मेजर क्लॉज किस तरह से डिफाइन किया गया है वो बताएगा कि फोर्स मेजर उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से अफेक्ट करेगा. तो ये कौन सा ऑप्शन कह रहा था गाइस? दिस इज ऑप्शन बी, राइट? क्लियर ऑल ऑफ यू? any doubt? If you have any doubt, please write it in the comments. Is there still any issue with my voice? All right, guys, is it better now, my voice? Let us move on to the next question. All right. Meanwhile, Siddhant ने मुझसे कहा है कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. सो सिद्धांत, क्वेश्चन जो ये कह रहा था कि एक मिनट, आप क्वेश्चन फिर से देख लो. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस. बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट इन द पैसेज अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. आपको देखना है कि ऑथर का जो आर्गुमेंट है उससे सिंक कौन सा है. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसके सिंक में है, राइट? ऑथर ने क्या कहा था? ऑथर ने कहा था कि फोर्स मेजर क्लॉज क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है. फोर्स मेजर क्लॉज का डेफिनेशन जो मतलब एक ब्रॉड जनरल सा डेफिनेशन दिया, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो डिटरमाइन करेगा कि फोर्स मेजर क्लॉज उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है कि जिसमें फोर्स मेजर क्लॉज को सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया हो. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे फोर्स मेजर क्लॉज का एम्बिट जो है वो ज्यादा हो सकता है, जिसमें मैन मेड कैलेमिटीज भी हो गए. मैन मेड कैलेमिटीज का भी डेफिनेशन वो डिटरमाइन कर सकते हैं. हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या सिविल डिस्टर्बेंसेस को उसमें ना इंक्लूड करें, एपिडेमिक को ना इंक्लूड करें, सिर्फ और सिर्फ अर्थ मतलब सिर्फ और सिर्फ लेट्स से फॉर एग्जांपल वॉर को रखें, है ना. वॉर पार्ट हो सकता है, लेकिन सिविल डिस्टर्बेंस जो है या पब्लिक डिसऑर्डर है उसको इंक्लूड ना करें. तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉज को किस तरह से डिफाइन किया गया है, राइट? ये दिया गया था. तो हमें यही देखना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑथर के आर्गुमेंट के साथ करेक्ट है. पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि जनरली हैव ए यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑल द केसेस में फोर्स मेजर क्लॉज का इम्पैक्ट यूनिफॉर्म तब होता है जब फोर्स मेजर क्लॉज का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, अगर वो एकदम स्टैंडर्ड तरीके से कहीं डिफाइन किया गया रहता. और कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को ओवरराइड करता है. लेकिन ऐसा नहीं है. पैसेज में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि फोर्स मेजर उस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से डिफाइन किया गया है वो डिटरमाइन करेगा कि वो किस तरह से उसको इम्पैक्ट कर रहा है. तो विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. ऑप्शन सी ये कह रहा है कि फोर्स मेजर क्लॉज और मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉजेस जो है वो दोनों का सिमिलर इम्पैक्ट है, जो कि ऐसा नहीं है. पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉज है उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से होता है, राइट? आई होप सिद्धांत नाउ इट इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. गाइस फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. मैंने अपना फोन अपने हाथ में रखा है एंड आई एम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वंस कॉमेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल रिप्लाई बैक हियर. Let's go through question number 2. Imagine there is a domestic commercial contract for supply of certain goods for a certain price between A and B.
However, in pursuance of the same, both A and B forget to negotiate and agree on the terms of a force majeure event, and the contractual document does not contain force majeure clause. In such a situation, what would be the fate of the contract in the event like that of COVID-19? अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन ए और बी जो है फोर्स मेजर क्लॉज को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना भूल गए, राइट? So in a situation like this where the force measure clause is not included in the contract, what will happen when an event like COVID-19 has happened, right? COVID-19 जो epidemic था, pandemic था, that had disrupted the entire supply chain. सारे contracts जो हैं उसके वजह से suffer किए थे, right? सारे commercial transactions hamper हुए थे. So in that case, जो parties का obligation है वो क्या रहेगा? Can they avoid their obligation? This is what we have to decide, right? Especially in case where the contract does not contain force majeure clause. अब खुद सोचो कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उससे पहले किसी को लगा भी था कि कोविड जैसा डिजीज आएगा एंड द एंटायर कंट्री विल बी शट डाउन? द आंसर इज नो. सो बहुत सारे पार्टीज ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉज इंक्लूड ही नहीं किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनका जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है. सो वो उनके ऊपर अब क्या होगा, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में के ऊपर कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड हियर. फर्स्ट ऑप्शन इज, as the parties did not negotiate on the force majeure clause, either of them cannot take an exception to the breach of contract. ये क्या कह रहा है कि force majeure clause जो है वो नहीं था, तो अब they cannot take exception, और ये breach of contract में ऐसा नहीं होगा. The parties can invoke material adverse change clause, ठीक है? In the absence of such clauses in the contract, the courts may resort to the applicable law, that is the Indian Contract Act 1872, to give relief to the parties. And fourth option is none of the above. So guys, please write down your answer. Passages फिर से दिखाऊं आपको, in case if you have an issue. Let me show you the passage once again. एक बार आप फिर से देख लो, अगर in case क्वेश्चन तो सब पढ़ ही लिए होंगे. All right, I am getting some answers now. Adisha, Janvi, Siddhant, Aditya, Uddhav, Kartik, Hidden Lawyer and Blessing Always Guruji. आप सबका आंसर करेक्ट है. चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पैसेज में छिपा हुआ है. सो गाइस, प्लीज रीड दिस पार्ट ऑफ द पैसेज एंड देन write down your answer. Certain contracts may state that if a force majeure clause is applied, the contract may automatically be terminated. On the other hand, some contracts may even state that the duty to fulfill the contractual obligation may be suspended for a certain period of time, and if the force majeure event is not curbed or treated even after such time, then eventually the contract may be terminated. Though there cannot be a one size fits all solution to this question. Now guys, please start paying attention from this part. And it depends upon how the force majeure clause is worded in a specific contract. And in the absence of the same, आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस पर्टिकुलर लाइन में छिपा हुआ है. प्लीज रीड इट. In the absence of the same, applicable laws related to the same will be required to taken into consideration. Now you guys tell me what is which is the applicable law which will be taken into consideration when we are dealing with contracts.
किसी ऑप्शन में है ये? देखो कौन सा ऑप्शन में है। एप्लीकेबल लॉज के बारे में कहाँ बात किया गया है? दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी, राइट। आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ में ही छिपा हुआ रहता है. ऑल यू हैव टू डू इज टू पे अटेंशन व्हाइल यू आर रीडिंग द पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम. मेक श्योर दैट यू आर अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंट लाइंस इन द पैराग्राफ. देखो जब क्वेश्चन हमें भी सॉल्व करना होता है तो हम किस तरह से, क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं. लेट मी गिव यू दैट पर्सपेक्टिव. So in a passage, there are certain important lines which are relevant, which are very important, जो कि प्रिंसिपल की तरह काम करता है, ठीक है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल तो हम पैसेज में दे ही नहीं सकते. आगे पीछे थोड़ी बहुत इधर उधर की बात होगी, एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है कि व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट ऑफ लॉ विच इज प्रेजेंट इन द पैसेज, है ना. पूरे पैसेज का हर एक लाइन जो है वो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ लॉ की तरह काम नहीं करता, है ना. जो लीगल प्रिंसिपल है आपको उसको आइडेंटिफाई कर लेना है पहली बार ही पढ़ के, और जहां आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया आपका दिमाग भी यू नो क्या कहते हैं उसको, इट विल बी वेरी आई मीन सतर्क हो जाएगा उस टाइम पे कि दिस इज द लाइन, इस चीज को, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को आई हैव टू कंसिडर व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, राइट. सो मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पे भी आपको लगे कि इस पे क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. एम आई क्लियर गाइस? नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. In the same fact situation as mentioned above, with the modification that there is a force majeure clause in the contract between A and B. Let us suppose that B, who was to supply goods to A on certain date and time, faced issues in relation to procurement of goods due to mill strike and also because of rise in prices of goods. In this case, can B claim the suspension of performance of contract on the basis of force majeure? अब फोर्स मेजर का डेफिनेशन कहाँ था जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था, ध्यान है आपको? क्या स्ट्राइक जो है और राइज इन प्राइसेस, कैन इट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फोर्स मेजर? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. कैन a mill strike or price rise of goods, can they be considered within the ambit of force measure? आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लास में पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. This is given in section 56 of Indian Contract Act. Doctrine of frustration ये कहता है कि अगर कोई भी impossible situation create हो जाता है जिससे कि contract after formation it is not possible for the parties to fulfill their obligation. और ये impossible situation किसके वजह से होगा? वो impossible situation जो होता है वो होता है either because of it happens because of act of God, जो कि parties के control के beyond होता है, ठीक है. So events which the parties cannot control, right, or they could not have reasonably foreseen while getting into the contract, ठीक है. अगर इस टाइप का नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल इवेंट होता है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड पार्टीज आर फ्री फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, राइट. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? सो फोर्स मेजर भी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, राइट. अब फोर्स मेजर क्लॉज जैसा कि पैराग्राफ में बताया गया था कि इसका एम्बिट पार्टीज कैन डिसाइड, इट कैन आल्सो इंक्लूड सर्टेन मैन-मेड कैलेमिटीज, बट साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होता है कमर्शियल हार्डशिप. कि अगर कमर्शियल हार्डशिप हुआ है, प्राइस राइज हो गया या पार्टीज आर जस्ट नॉट एबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन बिकॉज उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, तो ये सारे कमर्शियल हार्डशिप के अंदर आता है एंड कमर्शियल हार्डशिप कैन नॉट फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर रूल, ठीक है. अब जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी क्लास में और ध्यान दिया होगा वो
क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ जाएंगे कि अच्छा मिल स्ट्राइक की बात हो रही है, प्राइस राइज की बात हो रही है, ये तो कमर्शियल हार्डशिप है, एंड देयरफॉर इट विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ फोर्स मेजर। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन है जो कह रहा है? Come on, guys, write it in the comment section. Option B, read option B. Such situation cannot be covered under force majeure as it is just a case of disappointed expectations by commercial hardship, and hence B cannot invoke the clause. It is merely a case of commercial hardship. Guys, is it clear to all of you? कहीं किसी को कोई डाउट है? Shall I move on to the next question, guys? Hi, Sumit. Welcome to the class. Now let's move on to the next question. ये जो स्लाइड है, इज इट विजिबल, इज इट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कहीं पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है आपको स्क्रीन पे? ऑलराइट, फैंटास्टिक। सो लेट्स let us solve question number 4. This is the last question in this particular passage. Typically, the material adverse change MAE provision in an agreement contemplates events which, if they occur or are likely to occur, would have a materially adverse change or effect on the assets, business, property, liabilities, financial condition, results, operation of the target, or that affects the ability of the transacting parties to consummate the transaction, or the validity or enforceability of the transacting parties to its rights and remedies under the transaction documents. Which of the following sample clauses in a contract resembles an MAE clause? Now see, in this particular question, आपको पैसेज पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है उसी को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मटेरियल एडवर्स चेंज क्या होता है ये क्लियरली यहाँ पे स्पेल्ड आउट है, राइट? All you have to do is to read the question carefully and then see which of the option will fall under the ambit of material adverse change. Clear? So let us read option A. In the event either party is unable to perform its obligations under the terms of this agreement because of act of God, strikes, equipment of transmission failure or damage reasonably beyond its control, such party shall not be liable for damages to the other for any damages resulting from such failure to perform. ठीक है? ये एक क्लॉज है, राइट? अगर ये क्लॉज MAE क्लॉज है, this is what we have to decide. Next, option B. Except with respect to payment obligations under this agreement, no party shall be liable for, nor such party shall be considered in breach of this agreement due to any failure to perform its obligations under this agreement as a result of cause beyond its control, including any earthquake, labor problem, unavailability of supplies. Guys, come on, write it here. Write your answer. Which of the following option is a MAE clause? I'm waiting for your answer in the your answer. Please write it in the comment section.
दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, सो आप ध्यान से इसको सॉल्व करना. All right, let me read material adverse change provision. Provision in an agreement contemplates events which, if they occur or are likely occur, would have a materially adverse change or effect on the assets, business, property, liability, financial condition, results, operation of the target, or that affects the ability of the transacting parties to consummate the transaction, or the validity or enforceability of the transacting parties to its right and remedies under the transaction documents. ठीक है. So basically ऐसा events जो कि materially adverse change produce करता है on the asset and business or the rights of the parties, ठीक है, in a contract. पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन में एक्ट ऑफ गॉड भी है, स्ट्राइक्स भी है, इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन फेलियर है, डैमेज है, ठीक है, ये सारी चीजें. दूसरा ऑप्शन में क्या है? इंक्लूडिंग एनी अर्थक्वेक, लेबर प्रॉब्लम, अनअवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज. तो मोर और लेस दोनों जो क्लॉज है वो एक ही टाइप की बात कर रहे हैं, और दोनों में सेम टाइप का एग्जाम्पल भी दिया गया है. दोनों में आपका एक्ट ऑफ गॉड भी है और क्या कहते हैं, मैनमेड कैलमिटीज भी है, लाइक लेबर प्रॉब्लम या कमर्शियल हार्डशिप भी इंक्लूडेड है दोनों में, राइट? तो क्या दोनों ऑप्शन जो है वो एमईए क्लॉज के अंदर आ रहे हैं, या दोनों में से कोई नहीं आ रहा, राइट? सो ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, इधर होगा ऑप्शन सी और होगा ऑप्शन डी. सो विच वन यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन? पैसेज एक बार देख लें. क्या ये देखिए कि फोर्स मेजर और मटेरियल एडवर्स क्लॉज दोनों सेम होता है या दोनों अलग अलग होता है? कहीं दिया हुआ था ये पैसेज में? रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो फोर्स मेजर और मटेरियल एडवर्स क्लॉज चेंज जो है वो अलग होता है. अ फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, whereas an material adverse change clause applies to the allocation of risk in transactions before their closure or completion. So applies to the allocation of risk. इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्क किसके ऊपर शिफ्ट होगा इन केस इफ सर्टन इवेंट हैज हैपेंड. अगर कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिस्क है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ये बताता है मटेरियल एडवर्स चेंज क्लॉज. प्लीज रीड इट. रीड दिस पर्टिकुलर लाइन. A force measure clause applies in the context of ongoing contractual obligation. Force measure clause का result क्या होता है कि that will free the parties, right, from their respective obligation. Whereas an MAE or material adverse change clause applies to the allocation of risk in transactions before their closure or completion. तो transaction complete नहीं हुआ है, वो close नहीं हुआ, उससे पहले risk कैसे allocate होगा ये बताएगा material adverse change. Now let's read the question again and see which one is the correct answer. All right, Shruti, I'll explain it again. Come on, guys. I'm waiting for your answer. Read clause A and clause B. In the event either party is unable to perform its obligation under the terms of this agreement because of act of God, and so, such party shall not be liable for damages to the other for any damages resulting from such failure to perform. Now, is this a material adverse change clause or a force measure clause? क्या यहाँ पे रिस्क एलोकेट हो रहा है बिफोर द क्लोजर? नहीं, ये क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, स्ट्राइक होता है या कोई भी इस टाइप का इवेंट होगा तो बोथ द पार्टीज आर फ्री, उनके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी नहीं होगी, उनको डैमेजेस नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है. जबकि मटेरियल एडवर्स चेंज में हमने क्या पढ़ा था अभी पैसेज में, MAE क्लॉज में क्या पढ़ा था, इट विल एलोकेट रिस्क बिफोर द क्लोजर, राइट? क्या ऐसा कुछ है इसमें? द आंसर इज नो, राइट? नाउ लेट अस रीड ऑप्शन बी.
except with respect to payment obligation under this agreement, no party shall be liable for, ठीक है, nor such party shall be considered in breach of this agreement due to any failure to perform its obligation under this agreement as a result of cause beyond its control, including so and so. ये भी वही कह रहा है कि parties will not be liable to pay damages in case of earthquake, labor problem, unavailability of supplies and all that. तो ये भी क्या कह रहा है, parties को free कर दे रहा है from their respective obligation in case these events happen. So ये भी जो clause है वो क्या, ये किस type का clause है, material adverse change या force measure? Come on, write it here, write it in the comment section. मैं पढ़ रहा हूँ आपका comment. This is again an example of force measure. तो क्या इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन MAE clause है? The answer is no. The correct answer is option D. All right. So this question, as you can see, guys, this was a very tricky question. आपको question भी पढ़ना था और पैराग्राफ का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो था, जो कि आपको हेल्प करने वाला था ये डिसाइड करने में कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, राइट? सो लाइक आई सेड इट बिफोर, while you are going through the passage for the first time, make sure कि जो important part है, जहाँ पे difference है या जहाँ पे definition है, या जहाँ पे liabilities decide करने वाला कोई भी ऐसा provision दिया हुआ है passage में, try to highlight that particular part, उसको underline करके रखो, right? That is very important, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको अचानक से टाइम लगेगा कि अच्छा, all right, fine, this particular part of the passage may have an impact in deciding the liability under this question, right? ठीक है, तो वो आप प्रिंसिपल आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पैसेज पढ़ने में, और ये आपका बहुत ज्यादा समय आपका समय बहुत ज्यादा बचाएगा। ये कैसे बचाएगा? तो आपको पूरा पैसेज बार बार नहीं पढ़ना होगा। Once you have identified the operative part of law in the passage, all you have to do is to see that whether that particular part will have a forbearing impact on your factual situation or not, in that particular question or not, right? Now let us move on to next question. Next passage, in fact, this is passage 2, CLAT 2020 का question paper आज हम discuss कर रहे हैं, and this passage is on test of obscenity. Any question? If any one of you have any doubt, please write it here. Sneha, can you elaborate your question? I'm just not able to understand the doubt that you have raised in the comment section. Sneha Tiwari, please elaborate. All of you, are you done with the slide? The issue of obscenity has vexed the courts in India and abroad for a long time now. The intriguing question has always been the same, that is, what should be the standards to qualify something as obscene in the eyes of law? In the United Kingdom, way back in 1868, the court laid down the Hicklin's test in Regina versus Hicklin and held that the test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. Now see guys, जैसे मैं पहली बार अगर इस पैसेज को पढ़ूंगा तो मैं किस पार्ट को अंडरलाइन करूंगा? टेस्ट ऑफ ऑब्सिनिटी। ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप जैसे ही पैसेज पढ़ोगे आप देखोगे कहीं डेफिनेशन है किसी पर्टिकुलर पार्ट में या कोई ऑपरेटिव पार्ट है कि ऑब्सिनिटी अगर है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, क्या सजा हो सकती है, थिंग्स लाइक दैट। So you must highlight that particular portion in the passage. Next, Hickling's test postulated that a publication has to be judged by obscenity based on
based on isolated passages of a work considered out of context, and just by their apparent influence on most susceptible readers, such as children or weak-minded adults. However, this test was later rejected by most of the jurisdictions. ठीक है, ये पार्ट भी आप ध्यान में रखोगे, ये भी पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि it was rejected by most of the jurisdictions. Next, there were many judgments where it was stipulated by the Indian courts that obscenity has to be judged in the context of contemporary social mores, current socio-moral attitude of the community, and the prevalent norms of acceptability, susceptibility of the community in relation to matters in the issue. Then case ka naam hai, this is not very important. Next, these judgments indicated that the concept of obscenity would change with the passage of time, and what might have been obscene at one point of time would not be considered as obscene at a later period. This came to be known as community standard test. Again, ये दो टेस्ट यहाँ दिया हुआ है, एक टिकलिंस टेस्ट है, दूसरा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. अब जब मैं पहली बार इसको पढ़ूंगा अचानक मतलब द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, आई विल highlight this particular part. Why? Because this will help us in solving the questions. Next, in Bobby Art International versus Om Pal Singh, the court upholding the community standards test held that complete message and context of the objectionable scene, form, picture, etc. needs to be examined in order to find out whether the alleged material is obscene or not. अब कौन से कोर्ट ने कहा ये? SEC का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने कौन से टेस्ट को अपहेल्ड किया है? कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को. क्या कहा है कि यू कैन नॉट सिंपली टेक अ पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट और सीन और पिक्चर and judge it in isolation. You must understand that what will be the impact of that particular that particular piece of art in the minds of reader at that particular time. एक चीज जो कि एक टाइम पे obscene हो कंसिडर की गई है, जरूरी नहीं है कि वो in coming years that should be considered as obscene, right? Best example, आप ये देखो कि let's say for example the temples in खजुराहो. जब टेम्पल्स खजुराहो में बने थे जहाँ पे एरोटिक आर्ट डिस्प्लेड है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में और उस टाइम पे दैट वाज एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड. बट सेम चीज यू कैन नॉट से कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उस टाइम पे उसको ऑब्सीन कहेंगे या नहीं कहेंगे, या पीस ऑफ आर्ट कहेंगे. हो सकता है सेम टाइम पे अगर हम कम्युनिटी को चेंज कर देते हैं और तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहां पे उसको ऑब्सीन कहा जाए, राइट? लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5. ऑल राइट, स्नेहा एंड रिया ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर इन सिचुएशन वेयर वी हैव eliminated two options but we are confused between let's say option A and option B, and दोनों जो है वो बहुत सिमिलर ऑप्शन साउंड कर रहे हैं. तो हम उस सिचुएशन में किस तरह से जज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं इस डिलेमा को आप सबने फेस किया होगा. So let me tell you how I proceed in a situation like that. सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी चाहिए कि लेट्स से दोनों में लाइबिलिटी यस है कि यस ए इज लायबल बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन. ऑप्शन ए ये कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यस ए इज लायबल बिकॉज ऑफ अनदर रीजन. ठीक है, तो वहाँ लाइबिलिटी आपने डिसाइड कर लिया कि ए की लाइबिलिटी होगी, लेकिन जो रीजन होता है वो दोनों में डिफर करता है. तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा रीजन जो है वो प्रिंसिपल के साथ जा रहा है. याद है आपको जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो किस बेसिस पे जज करना होता है? आपको जज करना होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल विच इज गिवन इन द पैसेज, राइट? So the option which is closer to the principle which is given in the passage will be the correct option. ठीक है? So always try to find out the justification for that reasoning in the passage. The option which is similar to the principle which is given in the passage will most likely be the correct answer. है ना?
ये होता है। तो वो जो रीजनिंग का पार्ट है, आपको देखना होगा कि पैसेज में जो लॉ दिया हुआ है उससे क्या वो रीजनिंग जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर? एम आई क्लियर, स्नेहा एंड रिया? All of you, in case you if you have any issue, please write it down in the comment. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। सी, क्लैट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और यहाँ कंपटीशन कितना टफ है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। एक एक नंबर पे, इनफैक्ट एक एक नंबर नहीं, एक नेगेटिव, अगर आप एक गलत इनकरेक्ट क्वेश्चन भी होता है ना, तो -2.5 मार्क्स जो आपका डिडक्ट हुआ है उसके वजह से भी आपका रैंक काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। सो इन दैट सिचुएशन, अगर क्या आपको रिस्क लेना चाहिए? क्या आपको रिस्क लेना चाहिए when you are solving the question? Let's say for example you are stuck in a question where you are confused between two options. You know for sure कि जो दो क्वेश्चन है, दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए हैं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो बचा हुआ दो ऑप्शन है उन्हीं में से कोई एक होगा, एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू? क्या आपको वहां बैठ के एकदम पिन पॉइंट उसका करेक्ट आंसर लाना चाहिए, या आपको एक रिस्क लेके, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, जो आपको लग रहा है, जो आपकी गट फीलिंग कि नहीं दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, वहां मार्क करके एंड देन यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डू यू फील कि जब वो 50-50 वाला चांस है, मतलब टू ऑप्शंस हैव बीन एलिमिनेटेड एंड द रिमेनिंग टू ऑप्शंस आर देयर, एंड यू आर श्योर दैट दीज टू, द आंसर हैज टू बी द हैज टू बी वन ऑफ द ऑप्शन बिटवीन दीज टू ऑप्शंस, तो उस केस में क्या आपको रिस्क लेना चाहिए? सी, इन माई ओपिनियन यू शुड टेक द रिस्क। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रीजनिंग, मे बी इन सम अदर क्लास आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो भगवान का नाम लेके आप वहां रिस्क लेना, राइट? बिकॉज मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस टू टेक द रिस्क व्हेन यू आर डैम श्योर, व्हेन यू आर 100% श्योर कि ऑप्शन जो है, वो आंसर जो है, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, मे बी इन सम अदर क्लास मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके बताऊंगा कि जो मैं कह रहा हूँ हाउ मच सेंस इट्स मेकिंग, या अगर आप जानना चाहते हैं तो just write it in the comment section and then I'll explain it to you. Issue of obscenity explain कर दीजिए. All right, this is one question, and then Shruti Singh has asked me to explain force measure once again. Shruti, I'll just explain it in a nutshell. फोर्स मेजर जो होता है, एक ऐसा क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि ये बताता है कि किस सिचुएशन में पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। ये किस टाइप के सिचुएशन होते हैं? ये ऐसा सिचुएशन होते हैं जो कि अनफोर्सेबल होता है और जो कि पार्टीज के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। ठीक है, सो पार्टीज वेर नॉट इन अ सिचुएशन टू foresee these kind of events when they were getting into the contract. First thing. Second thing is that the event the event was beyond the control of both the parties, right? So उनका किसी भी तरह से इवेंट के होने या ना होने में से नहीं था, राइट? किस टाइप का इवेंट हो सकता है ये? तो ये इवेंट जनरली फोर्स मेजर जो है वो डिफाइंड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड होता है उसी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट को इम्पैक्ट भी करेगा। लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स मेजर के अंदर एक्ट ऑफ गॉड आता है, ठीक है? देन सर्टन कमर्शियल सिचुएशंस भी आ सकती हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल मिल में स्ट्राइक हुआ, या से फॉर एग्जांपल अगर वो वहाँ मेंशन्ड है तो, अदरवाइज मिल में स्ट्राइक या प्राइस राइज जैसे कमर्शियल हार्डशिप है। मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर जो है वो सिटी में खराब हो गया, राइट्स हो गए हैं, ठीक है, वॉर हो गया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक एरप्शन है, ये सब एक्ट्स ऑफ गॉड, हरिकेन आ गया, या डैम जो है वो ब्रेक हो गया एंड द एंटायर सिटी इज फ्लडेड. So these kind of events will fall under the ambit of force majeure. Obscenity. All of you, have you gone through this particular question? Let me first read the question and then I'll explain the definition of obscenity. जो दोनों टेस्ट हैं उन दोनों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. All right. So a daily local newspaper called Ramanan Bazar Patrika, having wide circulation in Anand Nagar, published on 1st July 2019 an article with a picture of Boris Becker, a world-renowned tennis player, posing nude with his dark-skinned
fiancée by name Barbara Feltus, a film actress, which was photographed by none other than her father. The article states that in an interview, both Boris and Barbara spoke freely about their engagement, their lives and future plans, and the message they wanted to convey to the people at large for posing to such a photograph. Article picturizes Boris as a strident protester of the pernicious practice of apartheid. Further, it was stated that the purpose of the photograph was also to signify that love champions over hatred. Will the alleged picture classify as an obscene material in India? Guys, what do you think? There are two tests. एक हिकिन्स टेस्ट है और दूसरा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है. कोर्ट ने कौन से टेस्ट को अपहेल्ड किया था? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे हाईलाइट करने को कहा था आपको. कोर्ट अपहोल्डिंग द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट held that complete message and context of the objectionable scene needs to be examined in order to find out whether the alleged material is obscene or not. ठीक है. So what is obscene? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम पहले ये देखेंगे कि मैसेज क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है, और कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है, टाइम पीरियड कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि whether that particular piece of art can be considered as obscene or not, right? So what do you guys think? Let me give you the options. So as per community standard, can it be considered as obscene? अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, नो अकॉर्डिंग टू हिकिन्स टेस्ट इट विल नॉट क्लासिफाई एज obscene. क्या हिकलिन्स टेस्ट जो है वो कोर्ट ने अपहेल्ड किया था? The आंसर इज नो. सो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो गया, बचता क्या है? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. नाउ यू कैन बी कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन बी एंड सी. रिया एंड श्रुति, प्लीज पे अटेंशन हियर. आपके क्वेश्चन का आंसर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? Yes, according to the community standards test, the picture will classify as obscene. No, according to community standards test, the picture will not classify as obscene. Now, option B और C में दोनों में जो रीजनिंग दी गई है वो पैसेज में प्रिंसिपल जो दिया हुआ है उसके हिसाब से करेक्ट है. ठीक है, तो रीजनिंग को आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे डिसाइड करोगे लाइबिलिटी क्या है, यस या नो. तो व्हाट डू यू थिंक, कैन इट बी कंसिडर्ड एज ऑब्सीन? मैसेज क्या था आप देखो, अबाउट देयर एंगेजमेंट, देयर लाइव्स, फ्यूचर प्लान्स, स्ट्राइडेंट प्रोटेस्टर ऑफ pernicious practice of apartheid. Apartheid का मतलब क्या होता है? रेसिज्म, राइट? तो अगर रेसिज्म के अगेंस्ट कोई बंदा अपना वॉइस रेज कर रहा है एंड फॉर दैट ही हैज पोस्ट न्यूड, राइट? सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या उस पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट है, जो पीस ऑफ आर्ट है, उसको ऑब्सीन कह सकते हैं? क्या यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसके फोटोग्राफ्स को जस्टिफाई कर रहा है? गाइस प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. द आंसर इज यस, राइट? द आंसर इज यस. अब आप इस चीज को किस तरह से जस्टिफाई करोगे? मैं पैसेज एक बार फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूँ. हिकलिन्स टेस्ट में क्या था? A publication has to be just for obscenity based on isolated passage of work. Just a minute. Whether the tendency of matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences. ठीक है, पहला पार्ट ये. Then this particular part, read it. Obscenity has to be judged in the context of contemporary social modes, current socio-moral attitude of the community, and the prevalent norms of susceptibility of the community in relation to matters in the issue. तो इससे बहुत ही क्लियर है कि जो करंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है, and social moral attitude of the community towards a particular issue. What is the current socio-moral attitude of the community towards apartheid?
क्या अगर किसी के पास उस टाइप का पोस्टर जाएगा तो दैट इज will it have a tendency to corrupt that particular person, have immoral influences on him? The answer is no, because the message was very clear, loud and clear, and therefore option C is correct. Right? Next, the difference between Hicklin test and community test standards test is, डिफरेंस क्या है हिकलिन टेस्ट एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट में? कम ऑन भाव्या, श्रुति, सिंधुजा, रिया, हसिका, आंसर लिखो आप लोग फटाफट. अनिमेश, क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिकलिन्स टेस्ट एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट? और मैंने ये बहुत बार अभी एक्सप्लेन भी किया है. The former focuses on the susceptibility of the minds of individual to get corrupted, while the latter hinges upon the context, intended meaning, and contemporaneous socio-cultural environment of the society. Option B, as per Hecklin test, a nude picture of a woman per se can be obscene, while as per the later, the picture should be suggestive of depraved mind and designed to excite sexual passion in person who are likely to see it. The former considers obscenity as a changing concept with changing times, while the latter does not. ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं? ऑप्शन सी पूरे तरह से इनकरेक्ट है. अभी हमने देखा कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट में क्या है कि व्हाट कैन बी ऑब्सीन एट वन in one community and at one point of time may not be obscene to another community and at some other point of time. ठीक है? सो इसका मतलब कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट जो है वो चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से, चेंजिंग कम्युनिटी के हिसाब से ऑब्सिनिटी को डिफाइन करता है. ऑप्शन सी इज रॉन्ग. इन दैट केस ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग. तो बचता क्या है? ऑप्शन ए एंड बी. अमेजिंग गाइस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. श्रुति, आप एक बार फिर से अपने आंसर को फिर से ऑप्शंस को पढ़ो. ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. मैंने अभी एक्सप्लेन किया ऑप्शन डी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम वेरी हैप्पी आप सबने करेक्ट आंसर दिया है. आप सबको नाउ आई फील कि आप सबको हिकलिन्स टेस्ट एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट अलोंग विद ऑब्सिनिटी पूरी तरह से समझ में आ गया है. ऑलराइट, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The issue of obscenity is fundamentally related with which of the following? Freedom of religion of an individual. क्या religion obscenity से कहीं linked है? Fundamentally linked है? The answer is no. Freedom of speech and expression of an individual. इससे है या नहीं? Right to privacy of an individual. क्या obscenity fundamentally privacy से linked है? See, प्राइवेसी किसके लिए? द पर्सन हु इज राइटिंग इट और मे बी हु इज पिक्चराइजिंग इट और हु इज देयर इन द पिक्चर, लेकिन वो वॉलंटरली उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है. राइट? तो इन दैट केस फंडामेंटली ऑब्सिनिटी जो है वो प्राइवेसी से तो लिंक्ड है नहीं, बिकॉज दैट पर्सन हैज वॉलंटरली गिवन हिज कॉन्सेंट, हिज फ्री कॉन्सेंट. राइट? ऑब्सिनिटी जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि व्हाट इज ऑब्सीन, जो कि पूरे कम्युनिटी को लग रहा है कि नहीं, दिस हैज द टेंडेंसी टू डिप्रेव एंड cast immoral and spread immorality in the society. ठीक है? उन सारे सिचुएशन, उन सारी चीजों को कम्युनिटी एज अ होल कंसिडर करेगा ऑब्सीन. ठीक है? क्या प्राइवेसी तो आ नहीं रहा? क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ रहा है? द आंसर इज नो. तो ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट. व्हिच इज द करेक्ट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, क्या उसका जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्सीन है, क्या वो इमोरल है, डज दैट हैव द टेंडेंसी टू डिप्रेव एंड करप्ट इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. तो वहां पे क्या है कि एक सोसाइटी का कलेक्टिव राइट एंड ड्यूटी है, और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअलिस्टिक राइट है टू प्रोपगेट हिज थॉट्स, राइट, एंड एक्सप्रेस इट इन अ फ्री वे. राइट?
So therefore the correct answer is option D. Any doubt? Any doubt in this question? Please write it in the comment. Yes, all of you are correct. Janvi, Mohan, आपने कहा राइट टू प्राइवेसी. आई एम प्रीटी श्योर, आई एम श्योर कि अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा. क्यों राइट टू प्राइवेसी जो है वो इनकरेक्ट है? क्लियर है? All the students who have written option C as the correct option, I am hoping that now it is clear to you why option C is incorrect. In case if you still have any doubt, please write it in the comment section. All right, friends, let's move on to the next question. Question number 8. Consider the following situations. Choose the correct option as per the Hicklin's test. Now, in this case, दो options दिए हुए हैं, दो statements दिए हुए हैं. इन दोनों statement में को हम देखेंगे कौन सा statement correct है और कौन सा statement incorrect है. ठीक है? And हमें किस basis पे उसको decide करना है? Hicklin's test, community standard test को ignore करना है for this question. Statement 1. A movie scene where there are rows of Jewish naked men and women shown frontally being led into the gas chamber of Nazi concentration camp. Not only they are about to die, but they are stripped of their basic dignity in the last moment of their life. So, as per Hicklin test, can it be considered as obscene अगर किसी मूवी में जो कि एपेथाइट के ऊपर बना हुआ है, जो कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के ऊपर बना हुआ है, क्या इस पर्टिकुलर मूवी सीन को ऑब्सीन कहा जा सकता है एज पर हिकलिन्स टेस्ट? A movie which is made on anti-Semitism, wherein it is shown that Jews were stripped off before sending to Nazi concentration camp, gas chambers. Can it be considered as obscene? What is the message here? Community standard test के हिसाब से क्या होगा? क्या इसको obscene कहेंगे? The answer is no. But क्या Hicklin test के हिसाब से इसको obscene कहेंगे? This is what we have to decide. The controversial movie scene of Poolan Devi, the bandit queen, where she is paraded naked and made to draw water from the well within the circle of 100 men. Can this be considered as an obscene material? In case if you have any doubt, let me show you the definition of Hicklin test. काफी स्टूडेंट्स भूल गए होंगे, सो मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ. दोनों एग्जाम्पल तो आपको ध्यान में होगा. एक ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में है एक मूवी सीन के बारे में जो कि एंटीसेमिनिज्म के ऊपर है. मूवी जो है एंटीसेमिनिज्म के ऊपर है. एंड जूस वर परेडेड नेकेड बिफोर सेंडिंग देम टू गैस चेंबर्स इन नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स. The next one is about a Dalit woman who was paraded naked and was asked to draw water from a well in presence of more than 100 people, 100 men. Please read it. The test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. Hicklin test postulated that a publication has to be judged for obscenity based on isolated passages of work considered out of context and just by their apparent influence or most susceptible readers such as children or weak minded adults. तो आपको क्या लग रहा है कि जो children हैं और जो weak minded adults हैं, these two instances, do they have the tendency to corrupt them and spread immoral influences in the society? Please write it in the comment section. So see, यहाँ पे Hicklin's test में क्या कहा था? If there is something which
इज इमोरल, और न्यूडिटी जहां पे आ रही है उस चीज को हम ऑब्सीन कहेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट और द टेम्परामेंट ऑफ द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हिकलिन टेस्ट जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था चेंजिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस को. इसलिए जो कोर्ट्स है उसने एक नया स्टैंडर्ड टेस्ट इवॉल्व किया. वो क्या था? टेस्ट, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. ठीक है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखना था और जहाँ पे ये देखना था कि that particular the that particular society, whether the society at that particular time will consider this particular artwork as obscene or not. ठीक है, तो एकलिन टेस्ट में क्या था? चीजों को एज इट इज देखना था और ये देखना था कि चिल्ड्रन और वीक माइंडेड अडल्ट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. So as you can see in both the cases, when children or weak-minded people, adults, when they will see naked men and women walking and going towards gas chambers, तो क्या चिल्ड्रन और वीक माइंडेड एडल्ट्स को ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा, ये कॉन्टेक्स्ट पता होगा? द आंसर इज नो. उनको नहीं पता है कि हिटलर ने क्या किया था ज्यूज के साथ. या अगर एक वुमेन को इस तरह से नेकेड परेड करा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, तो क्यों करा रहे हैं? क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? ये तो उनको पता नहीं होगा, right? So that is the reason these two particular situations, as per Hicklin test, can be considered as obscene. Whereas when we'll apply community standards test, तो दोनों जो situation है वो obscene consider नहीं किए जाएंगे. ठीक है, क्लियर है? So इसका आंसर क्या होगा? Option C. Both 1 and 2 are obscene as per Hicklin test, but as per community standard test, they cannot be considered as obscene. Any doubt, guys? If you have any doubt, please write it in the comment section. Let's move on to the next question. Question number 9. This is the last question in this passage. An activist, while being semi-nude, allowed her body to be used as a canvas to paint on by her 2 minor children who were properly clothed. She uploaded this video of hers on an online platform with the message that she intended to normalize the female form for her children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade their mind. An advocate who sees the video registers a case of obscenity against her. Is it a case of obscenity as per community standard test? So who is this woman? She is an activist who is painting on her body her 2 minor children, right? What is the message? She intends to normalize the female form of her children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade their mind. And that is the reason why she has uploaded that video on online platform. As per community standard test, can this particular video be considered as obscene? Let's read the options. The options are clearly visible, right, guys? Please write it in the comment section if you have any doubt. All right, option A, this is a pure case of obscenity and she is spreading it. क्या ये pure case of obscenity है? Or is there any message behind it? This is a pure case of obscenity as well as children pornography, as the children were exposed to her nudity. Now, is it a case of child pornography? The answer is no. This is not a case of child pornography. Child pornography में जो children होते हैं उनको exploit किया जाता है, right? So यहाँ पे children's
her children were not exploited sexually. Therefore, this is not a case of child pornography. Option B is incorrect. Option C, this is not a case of obscenity because as per the community standards test, the video must not be seen in isolation, but in contextual setup of the message that the activist has put on normalization of a female's sexuality. Was this a message? The answer is yes. This option sounds very promising. Let's move on to option D. This is a case of obscenity as per the community standards test, as the video was blatantly obscene. So देखो option A and option D. Option B तो पूरी तरह से incorrect है. Option A and option D देखते हैं. Option A and option D दोनों कह रहे हैं कि the video is obscene, right? Option A का reasoning क्या है? कोई reasoning नहीं. It's pure case of obscenity and she is spreading it. Option D क्या कह रहा है? Because the video itself is blatantly obscene. दोनों का रीजनिंग भी सेम है, दोनों ऑप्शन भी सेम ही है, राइट? सो इन दैट केस ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों गलत होगा, क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. प्लस जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रीजन है वो ये है कि ऑप्शन सी में जो रीजनिंग दी गई है वो पूरे तरह से जस्टिफाई कर रहा है लॉज प्रिंसिपल्स विच वर गिवन इन द पैसेज. कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में ये बताया गया था कि द पीस ऑफ आर्ट मस्ट नॉट बी सीन इन आइसोलेशन, but the context and the overall message behind the art must be considered while deciding whether a particular piece of art is obscene or not. So in this particular case, the video was made with a message. She herself is an activist, and her message was to normalize female sexuality, right? And therefore, the video cannot be considered as obscene, and option C is correct. All right. देखो गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि वेदर इट इज एन ऑब्सीन मटेरियल और नॉट. तो मैंने किस तरह से बताया कि इसको ऑब्सीन कंसिडर करेंगे, आंसर किस तरह से लाएंगे. सिंपल सी बात है. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी जब दोनों सेम बात कह रहा है, ठीक है, एंड ऑप्शन सी इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, तो दोनों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी करेक्ट. एंड ऑप्शन सी का जो वेटेज है वो ज्यादा है, राइट? क्यों? क्योंकि पैसेज के हिसाब से वो ज्यादा justify कर रहा है, right? So in that case, we'll eliminate option A and D and we'll stick to option C, which is the correct option in this case. Now let's move on to next passage, passage 3. All right, guys, let's read this passage. On 7th May 2020, a major leakage of styrene gas was reported from the plastic manufacturing plant LG Polymers located on the outskirts of the Visakhapatnam city. अब देखो ये पहला लाइन ही पढ़ के तुम समझ सकते हो कि अगर किसी गैस के बारे में है, किसी प्लांट से यू नो जो गैस है वो लीक किया था, तो मोर और लेस पैसेज जो होगा वो टॉर्ट्स के ऊपर होगा. किस टॉर्ट्स में भी कौन से पोर्शन पे? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नाउ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऐसा टॉपिक होता है जो ऑलमोस्ट सब सारे स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, ठीक है. टॉर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नेग्लिजेंस हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, न्यूसेंस हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है. ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओगे. फोर्सिबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जनरल डिफेंसेस हैं, है ना. जनरल डिफेंसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्ट ऑफ गॉड जिसमें से एक हो गया, है ना. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं टॉट के, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स और जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, भले वो आज से 10 साल पहले भी क्यों ना आए, आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के ही एग्जाम देना, है ना. लास्ट मोमेंट पे आपको किस तरह से रिवाइज करना है? लास्ट मोमेंट पे जीके रिवाइज करो, लीगल के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, बस वो रिवाइज करो. मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसको देखो, ठीक है. सीआर के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्लासेस में आपको बताए गए हैं, उन सारी चीजों पर आप फोकस करो. जीके आप किस तरह से रिवाइज करोगे? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देखो. अभी कल फ्राइडे को जो है मैराथन सेशन होने वाला है सेम चैनल पे, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल एंड जीके टॉपिक विल बी डिस्कस्ड बाय द फाइनेस्ट फैकल्टीज, ठीक है.
आप उस पर्टिकुलर सेशन को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और उस सेशन में स्पेशली जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट 6 महीने के, वो सारे डिस्कस, ठीक है। सो प्लीज सिट डाउन विथ योर नोटबुक एंड go attend that session. All right, let's read passage 3. On 7th May 2020, a major leakage of styrene gas was reported from the plastic manufacturing plant LG Polymers located on the outskirts of the Visakhapatnam city. The accident took place when the cooling system of a polymers plant got clogged due to the mismanagement of factory workers and resulted in turning the city into a gas chamber. The gas which leaked was styrene gas, which is a hazardous chemical under Rule 2, Subclause E plus Entry 583 of Schedule 1 of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules 1989. Next, Principle 1, Polluter Pays Principle. The doctrine of polluter pays is a well-established principle of environmental law which places an obligation of compensating the damage to the people who ought to reimburse it and also have the capacity to disburse it. Now, what is the most important part of this particular principle? Compensating the damage to the people who ought to reimburse it and also have the capacity to disburse it. किसको compensate करना है? उन लोगों को जो कि polluter के वजह से damages suffer किए हैं, उनको compensate करना है. कौन करेगा? तो the person who has the capacity to do it. Who has the capacity to do it? The industrialist, right? उनके पास पैसा है, वो वहाँ business कर रहे थे. ये उनकी liability है कि अगर उनके वजह से environment pollute हुआ है, तो they must compensate and reimburse the people who have suffered damages because of it. The principle explicitly affirms that the person who damages or destructs the environment has the absolute obligation to bear the cost of ameliorating the environment. ठीक है? So who has the absolute obligation? The person who has damaged or destroyed the environment. In Enviro Legal Action versus Union of India, the Apex Code of India held that the polluter is legally responsible, again, legally responsible to reimburse the individual sufferers as well as pay for the revitalization of the damaged environment. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस पर्टिकुलर केस में? ये कहा था कि जो इंडिविजुअल सफर किए हैं उनको पोल्यूटर जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो डैमेजेस देगा, प्लस जो एनवायरनमेंट में डैमेज हुआ है उसको रिवाइटलाइज करने के लिए भी वो पे करेगा. ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रिवर में जो है वो पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया, तो उस रिवर को क्लीन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो ऑब्लिगेशन है, वो किसके ऊपर है? द पर्सन हु हैज डिस्चार्ज पोल्यूटेंट इन द रिवर. Simultaneously, if somebody use that particular polluted water, उसने किसी बंदे ने उस पोल्यूटेड रिवर वाटर को कंज्यूम कर लिया, उसकी तबीयत खराब होगी, पूरे गांव में सारे लोगों की तबीयत खराब होगी, तो उनको डैमेजेस जो हुआ है उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? अगेन द पोल्यूटर. तो दो ऑब्लिगेशन है, एक तो एनवायरनमेंट, जो डैमेज्ड एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कराना, उसको रिवाइटलाइज कराना. दूसरा, those person who have suffered damages, the polluter must compensate them. Okay. Next is principle of strict liability. The principle of strict liability was established in the year 1868 in the case of Rylance versus Fletcher. Anyone in class who can tell me the facts of this case, Rylance versus Fletcher? I'm pretty sure कि ये केस के बारे में आपने सुना होगा, क्लास में बहुत बार चर्चाएं हुई होगी इस केस के बारे में, है ना? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इसमें इलस्ट्रेट किया गया था, वो इसमें प्रोपाउंड किया गया था, राइट? एनीवन इन क्लास? रायलेंस वर्सेस फ्लेचर. गाइस, अगर आपको याद हो तो एक बंदा था जिसने वेल डिग किया था, राइट? एंड उसके एडजेसेंट में कोई एक माइंस हुआ करता था. कुछ कुछ ध्यान आ रहा है आपको? पानी भर जाता है और उसने कुछ हजार्डस आइटम जो है वो अपने लैंड पे लाया था, बहुत बड़ा सा पाउंड या वेल टाइप का उसने कंस्ट्रक्ट कर रखा था. उससे पानी अचानक से हेवी रेनफॉल होता है, भर जाता है, और जो एडजेसेंट उसका जो नेबर होता था, जिसका माइंस हुआ करता था, उसके अंडरग्राउंड माइन में वो जो वाटर उसने स्टोर कर रखा था वो फ्लो कर जाता है, राइट? सो उस केस में ये प्रोपाउंड किया गया था कि द पर्सन हु हैज ब्रॉट अ hazardous thing onto his land must compensate the other person for any damages which has been caused to him for the other party,
which has been caused to the other party because of the escape of that hazardous material. ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सॉल्व किया होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अपने घर पे टाइगर रखा है, टाइगर अचानक से उसके कंपाउंड से escape कर जाता है एंड किसी दूसरे आदमी को डैमेजेस कॉज करता है, या किसी ने स्नेक रखा था, किसी ने अपने घर पे पॉइजनस बेरीज रखे थे एंड पॉइजनस बेरी विंड चलता है एंड ऑल ऑफ अ सडन जो बेरीज है वो किसी और के लैंड पे चला जाता है एंड सम स्मॉल किड कंज्यूम्स दैट, ईट्स दोस बेरीज, पॉइजनस बेरीज। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, मॉक में भी मिला होगा आपको, राइट? पीवाईक्यूज में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। एनी डाउट गाइस? All right. So Ryland versus Fletcher, where the court held that any person who uses her land in an unnatural manner and who keeps any hazardous substance on such premises would be held liable under the principle of strict liability for any damage occurred on the escape of such perilous substance. Now इसमें क्या चीज है, इंपॉर्टेंट क्या क्या पार्ट है? देखो, hazardous substance इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, किस तरह से लैंड का यूज कर रहा है, अननेचुरल मैनर में लैंड का यूज किया है, किस केस में डैमेजेस पे करना होगा, when the hazardous substance escapes from his land, right? However, the person is liable only when there is non-natural use of land. अब non-natural use of land का मतलब क्या हुआ? Anyone in class who can explain it? Please write it in the comment section. What do you understand by non-natural use of land? The principle also restricts liability when the escape is due to an act of strangers. Now, please read this particular part. This is very important. Okay? This is one of the exception to the principle of strict liability. क्या कह रहा है? The principle also restricts liability when the escape is due to an act of stranger, act of God. For example, a natural calamity due to the person injured, or when it happens with the consent of the person injured or with statutory authority. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है गाइस, देखो इस पैराग्राफ में पहला पार्ट जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिफाइन किया यहाँ तक। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे। एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, व्हेन द डैमेज हैज अकर्ड आफ्टर टेकिंग कंसेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो कहते हैं, वीएनएफआई इज अ डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, राइट? ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, principle 3, principle of absolute liability. The absolute liability is a stringent form of strict liability. अब ये क्या कह रहा है, नाम ही क्या है इसका, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। यू विल बी एब्सोल्युटली लायबल फॉर योर wrongful acts, है ना? किस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगा? लेट्स रीड द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट। The absolute liability is a stringent form of strict liability as it is devoid of any exceptions. कौन से exceptions की बात हो रही है यहाँ पे? तो अभी exceptions, devoid of any exceptions that were mentioned in the earlier principle. तो strict liability में कुछ exceptions allowed थे, act of God, VNFI, consent, मतलब वही VNFI, that is consent of the injured party, ठीक है, act of stranger, ये सारे जो exceptions थे वो absolute liability में बिल्कुल भी applicable नहीं होंगे। For the first time in case of MC Mehta, ठीक है चलो, this principle implies that whenever an enterprise is engaged in any dangerous or hazardous activity that threatens the people working in the enterprise and those living by, it owes an absolute and non-delegable duty to the community. किस केस में absolute liability apply होगा? तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगा व्हेन द पर्सन इज एंगेज्ड इन डेंजरस और हजार्डस एक्टिविटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस केस में हो रहा था? उस केस में व्हेन यू आर यूजिंग द लैंड इन अ नॉन नेचुरल वे एंड व्हेन यू हैव बॉट समथिंग हजार्डस टू द लैंड, कुछ हजार्डस चीज आप लैंड पे लाए हो, ठीक है, एंड नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, और जो हजार्डस चीज आप लेकर आए थे वो स्केप कर जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी कब होगा? जब व्हेन अ पर्सन वाज एंगेज्ड, व्हेन एन एंटरप्राइज वाज एंगेज्ड। देखो यहाँ पे पर्सन भी नहीं है, एन एंटरप्राइज है, दैट मींस दैट द एक्ट वाज डन फॉर अ कमर्शियल पर्पस, है ना? द एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज इज अ कमर्शियल एंटिटी, राइट?
इट इज एंगेज्ड इन अ कमर्शियल एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए वो कुछ कर रहा है। किस टाइप का काम कर रहा है? हजार्डस काम कर रहा है, डेंजरस काम कर रहा है, ठीक है। और उसके हजार्डस और डेंजरस काम करने की वजह से, जो कि वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, उसके वजह से अगर उसके अपने वर्कर्स या दोज हु आर लिविंग नियर बाय टू दैट एंटरप्राइज, अगर वो सफर करते हैं, देन द एंटरप्राइज is absolutely liable to compensate its worker as well as people in the community who have suffered harm because of his activities. Clear? समझ में आ गया आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी में पहला पॉइंट ये होता है कि एन एन एंटरप्राइज इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, है ना, प्रॉफिट के लिए वो किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है। किस टाइप की एक्टिविटी में एंगेज्ड है? द एक्टिविटी मस्ट बी डेंजरस और हजार्डस, ठीक है। तीसरा क्या होता है? ड्यू टू द डेंजरस और हजार्डस एक्टिविटी, either the worker or the people living in the community nearby to that enterprise have suffered loss. All right. If harm is indeed caused, the enterprise will have to compensate for damages and can't use exceptions provided in the case of strict liability. The enterprise can't claim that the harm has not been caused due to negligence. तो इसमें negligence या कोई भी exception allowed नहीं है. Now let's attempt these questions. All right, guys. This is the last passage, so I want all of you to pay utmost attention. लेट अस ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने पूरा पैसेज लाइन बाय लाइन आपको समझाया है डिटेल में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, पॉलिटो पे प्रिंसिपल क्या होता है, तो पूरा पैसेज आपके सामने मैंने खोल के रख दिया है, राइट। नाउ आई जस्ट वांट यू टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स in these factual situation. Under which of the following principles would the company LPG Polymers be liable? अब देखो यार, इसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, ऑफ कोर्स होगा। उसने पोल्यूट किया है, हजार्डस मटेरियल उसके पास था, प्रॉफिट के लिए काम भी कर रहा था, और डैमेजेस भी कॉज हुए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा, होगा। तीसरा एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा। गाइस, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। द आंसर इज डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी होगी, एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी एप्लीकेबल होगी। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि एल जी पॉलीमर्स किस चीज में इन्वॉल्व था? कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, और स्टेरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा था। देखो यहाँ दिया हुआ है ना, स्टाइरीन गैस, हजार्डस केमिकल अंडर सो एंड सो रूल, ठीक है। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट, as per the polluter pays principle, LG polymers will be liable to pay amount of money for restoration of environment only। क्या सिर्फ एनवायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए उसे पैसा देना होगा? ओनली वर्ड यहाँ यूज किया है, therefore ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड compensation to individuals who suffered the loss, compensation to the victims, and none of the above। क्या ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट है? क्या सिर्फ एनवायरमेंट रिस्टोर करने के लिए उसे पे करना होगा? द आंसर इज नो। उसको विक्टिम्स को भी देना होगा, प्लस एनवायरमेंट रिस्टोर करने के लिए भी देना होगा, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A company ABC Limited operates an industrial chemical plant in the city of Azad Nagar. Due to an earthquake on July 22, 2020, the valves of the reactors in the plant get damaged, due to which the operators could not properly transport the hazardous gas for chemical vaporization, resulting in the gas leakage. The gas leakage resulted in the death of 12 workers of the plant and also some people living nearby the plant. In this situation, in order to decipher the liability of ABC Limited, choose the best option. क्या हुआ है? हजार्डस, अगेन इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट था, हजार्डस गैस यूज कर रहा था, अर्थक्वेक की वजह से डैमेजेस हुए और गैस जो है वो लीक कर गया, ठीक है। दिस व्हाट हैज हैपेंड in this case. Now let us read the options and see which one is the correct answer. Option A, ABC Limited can be held liable under the principles of strict and absolute liability.
and polluter pays principle as well as क्या strict liability इसमें applicable होगा? This is the first question that I want you guys to answer. Absolutely correct, Janvi. In this case, vis major, that is act of God, is applicable. And जब हम strict liability का principle पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? उसमें ये मेंशन था कि strict liability के अंदर certain exceptions होते हैं, like act of stranger, act of God, VNFI, right? Therefore, option A is incorrect. Why? क्योंकि यहाँ strict and absolute liability दोनों कह रहे हैं, तीनों principle कह रहे हैं in fact. Option B, ABC Limited can be held liable under polluter pays principle and the principle of absolute liability, but can be exempted under the rule of strict liability. Is option B correct? देखो एक बार में ही पढ़ के ऑप्शन बी समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन सी, एबीसी लिमिटेड विल नॉट बी लायबल अंडर एनी ऑफ द प्रिंसिपल. क्या ये करेक्ट है? क्या एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर कोई एक्सेप्शन अलाउड है? Is vis major, that is act of God, an exception in cases of absolute liability? The answer is no. Janvi, please read this. मैं आपके लिए स्लाइड को पीछे कर रहा हूं and I want you to read this. ठीक है, ये एक लाइन आप पढ़ो. The absolute liability is a stringent form of strict liability as it is devoid of any exceptions that were mentioned under the earlier principle. What were the exceptions? Please read it here. Act of God, act of stranger. So act of God was an exception under strict liability. और next principle क्या कह रहा है कि absolute liability is devoid of any exceptions. तो क्या act of God जो है वो हम use कर सकते हैं to for escaping liability under absolute liability? The answer is no, right? Option B is correct here. ABC Limited will be held liable under strict and absolute liability. Again, option D में कह रहा है कि strict and absolute liability दोनों applicable होगा, तो ये गलत है. ठीक है, next question number 13. अच्छा, before we discuss this question, I just want to know कि how many of you are attempting the daily GK questions that Clat Possible is posting on Telegram. आपको पता है कि हम लोग डेली जीके क्विज पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पे, एंड हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसमें एवरी डे वी पोस्ट टॉप 5 लीगल न्यूज, टॉप 5 डेली जीके न्यूज. फिर हर एक दिन का जो न्यूज है उसके बेसिस पे एक पैसेज होता है जो कि जीके पे उस दिन के हेडलाइन पे बेस्ड जीके का पैसेज है, एंड वी पोस्ट इट ऑन अ डेली बेसिस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल. So for those of you who are not aware about it, there's a small request. Please go to our Telegram channel, go to our Instagram channel. ठीक है, उसमें बहुत सारे लीगल जीके के कंटेंट जो है आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट? एंड ऑन अ डेली बेसिस जो टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि स्पेशली क्लैट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सोचो कि आज का न्यूज है ना, कोई हेडलाइन है जिसके ऊपर आपको पैसेज मिल जा रहा है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? प्लस क्विजेस होते हैं तो यू कैन ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट एंड सी कि क्या है, क्या बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने सही आंसर किया, कितने लोगों ने इनकरेक्ट आंसर किया एंड ऑल दैट, राइट? So please go through our Instagram and Telegram channels, right? Let's move on to question number 13. The argument of LG Polymers that they did not know that this styrene gas could leak. Is it a strong argument? Is it a weak argument? If they were involved in a commercial activity involving a hazardous chemical, क्या वो ये कह सकते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि गैस लीक भी कर सकता है? The answer is no. आपको लगता है कि जज कोर्ट इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा? Shruti has asked me this question. Isn't there any connection through act of God? Shruti, just read the very first slide. क्या यहाँ एक्ट ऑफ गॉड आपको कहीं दिख रहा है?
यहाँ पे लीकेज क्यों हुआ है? पॉलीमर प्लांट गॉट क्लॉग ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, यहाँ एक्ट ऑफ गॉड तो है ही नहीं, फैक्ट्स में ही नहीं है। ऑलराइट श्रुति, is it clear to you? All right, so which option is correct? Question number 13, option C is correct. C, that is, this argument is a weak argument and will not help in reducing the liability of LG polymers. क्यों? वैसे भी आपने सुना होगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ, या तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ भी है, और प्लस मतलब गैस लीक ही नहीं कर सकता, ऐसा कोई कैसे एज्यूम कर सकता है ना? तो दिस आर्गुमेंट इटसेल्फ इज फ्लॉड and will not be accepted by the court. Next, XYZ is a company operating in a pesticide factory in the city of Rampur. On one day, due to the negligence of factory staff, there is a leakage of the pesticide gas, as a result of which many pests and insects which feed on the plantation crops in the nearby farm are killed. There is no harm caused to the people living nearby or the workers of the pesticide factory. Damage किसको हुआ है? Environment को हुआ है ना? जो पेस्ट जो नियर बाय प्लांट्स, नियर बाय प्लांटेशन क्रॉप्स पे थे, वो सारे, उन सबकी डेथ हो गई. However, the leakage was so humongous that it reduced the quality of air in the city, causing breathing problems for the people living around in the area. In this case, XYZ will be absolutely liable but not strictly liable. XYZ will not be liable under the strict and absolute liability principles because the leakage only killed the pests and insects. XYZ's liability under the strict and absolute liability principles will depend upon the inquiry as to whether the leaked pesticide was a hazardous substance activity or chemical or not. XYZ will be liable under the polluter pays principle. Option D, XYZ will not be liable under polluter pays principle. Which option you think is the best one? पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? XYZ will be liable, will be absolutely liable but not strictly liable. क्यों strict liability? ऐसा क्या है इसमें जो कि नहीं होगा? क्या कोई ऐसा एक्सेप्शन है यहाँ पे जो कि कह रहा है वन डे ड्यू टू, किस वजह से लीकेज हुआ है? ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट्री स्टाफ. तो क्या नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट्री स्टाफ is an exception to the principle of strict liability? Students, please write it in the comment section. क्या आपको लगता है कि negligence of staff जो है वो एक exception है strict liability के लिए? The answer is no. Negligence नहीं था ना, strict liability का exception क्या क्या था? Act of God, VNFI, act of stranger. Negligence तो कहीं नहीं था. Option A is incorrect. XYZ will not be liable under the strict liability and absolute liability principles because the leakage only killed the pests and insects. क्या ऐसा है कि जब तक मतलब in case if if the environment is only damaged, in that case strict liability and absolute liability principle will not be applicable? The answer is no. Environment के damage पे भी, plus यहाँ जो आसपास लोग रह रहे थे, they have also suffered because of this leakage. उनको भी breathing issues हो रहा था. ऐसा नहीं कि उनको damages नहीं हुए, है ना? Option B is incorrect. Option D is also incorrect. Read option C. Will depend, absolute liability किस चीज पे डिपेंड करेगा? Whether the leaked pesticide was a hazardous substance or not. ये facts में mention नहीं है. XYZ जो polluter pays principle पे तो applicable, मतलब उसके लिए तो liable होगा ही, है ना? Therefore, the best option is option C. A, B, C is incorrect. All right. Any question that you have, guys? Any question that you have? Please write it in the comment section. Any last minute tips? Any last minute doubt? आपको आज का सेशन कैसा रहा? ये समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, किस पार्ट पे ध्यान देना है, किस चीज को इग्नोर करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है? सी इस through this particular session, the idea was to highlight the process which you must adopt
for solving these legal reasoning questions. ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको आपके साथ क्वेश्चंस को पढ़ के और ये बताऊं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है. ऑलराइट, in case if you have any doubt, please write it. If you want me to go through past 3 year question paper, आज तो हमने आधा क्लैट 2020 किया है, मैं ट्राई करूंगा कि क्लैट से पहले एक आध दिन और लेकर 3 घंटे या 4 घंटे का सेशन लेके लास्ट 2-3 साल का के सारे क्वेश्चंस को मैं सारे पैसेजेस को सॉल्व करा दूं. ऑलराइट, उससे क्या होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे आज हमने 3-4 टॉपिक्स को अच्छे से डील किया. कॉन्ट्रैक्ट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को किया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को कर लिया. ठीक है, देन सेकंड पैसेज में ऑब्सोनिटी था, ऑल्दो वो उतना मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं है, लेकिन ये 2 टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट 3 साल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू इट and we'll plan out another session very soon, maybe tomorrow or day after tomorrow, and we'll make sure कि हम ये सारे questions को करके जा रहे हैं. ठीक है, Riya Srivastava has asked me this question, sir please explain the difference between contract of guarantee and contract of indemnity. See, contract of guarantee and contract of indemnity दोनों जो है special kind of contract है. Contract of indemnity is given in section 124 of Indian Contract Act. Indemnity क्या कहता है? Indemnity का मतलब क्या होता है कि in case if one person has suffered loss because of the act of the other person, then he promises to compensate the other person for the loss. He or someone on his behalf will compensate for the loss. जैसे say for example, मेरे और रिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ that I'll supply 100 kg of apples to her. ठीक है, अब रिया मुझसे ये भी कह रही है कि सर इन केस अगर आप एप्पल्स को सप्लाई नहीं कर रहे हो और मुझे ये एप्पल किसी और को देना है, ठीक है, उससे मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एंड आई विल सफर अ लॉस ऑफ 10,000 रुपीज इफ यू डोंट सप्लाई मी द एप्पल बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो इन दिस केस जो मेरा लॉस होगा वो कौन पे करेगा? आप तो पे करोगे इन फॉर्म ऑफ डैमेज, लेकिन अगर आप पे नहीं कर पा रहे तो आपके बिहाफ पे कौन पे कर सकता है ना? आई वॉन्ट समबडी टू be the surety. I want somebody to indemnify me for this. ठीक है, तो सिचुएशन में क्या होता है कि either I can write it, I'll indemnify you for any loss that you may suffer because of me not fulfilling my obligation in this contract, or I can ask someone else to be the surety in my case and indemnify you in case if I breach the contract. ठीक है, तो ये होता है indemnity, right? गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, इंडेमनिटी में 2 या 2 से ज्यादा पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी होता है, गारंटी में मिनिमम 3 पार्टी होता है. गारंटी में बस एक और श्योरिटी इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि ये कहेगा कि इन केस इफ द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट able to fulfill his obligation and the other party has suffered loss because of this, then the principal debtor as well as the surety both are liable to compensate the third party who has suffered loss. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3-वे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं. एक तो जो 2 पार्टीज हो गए, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. ठीक है, प्रिंसिपल डेटर जब डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी जो है वो भी लायबल हो जाएगा पे करने के लिए जो डेट है ना? क्लियर? क्रेडिटर को समझ आ रहा है आपको? जैसे से फॉर एग्जांपल बैंक का, आपका क्लैट में बहुत अच्छा रैंक आया, आपको टॉप एनएलयू मिल गया, राइट, बट यू डोंट हैव द मींस टू गेट एडमिशन टू दैट कॉलेज. तो आप क्या करोगे? आप बैंक पे जाओगे, एजुकेशनल लोन लोगे. अब आपकी उम्र हो रही है 17 साल, बैंक आपसे कहेगा कि आप तो माइनर हो, हम आपको बैंक कैसे दे सकते हैं, यू कांट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी अनदर पर्सन हु इज अ मेजर, है ना? तो आप अपने फादर को लेकर आओ, who will also be a part of this contract, who will act as a surety in case कल को आप पढ़ लिख जाते हो, अच्छे जॉब लग जाता है, लेकिन आप हमारा पैसा नहीं पे कर रहे, then who is gonna pay us? या कल को आपको जॉब नहीं लग रही है, then who is gonna pay for your loan? So your father must be a surety, right? तो आपके फादर्स कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन लोन के एक पार्ट होंगे एज अ श्योरिटी. ही विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन केस इफ यू डिफॉल्ट इन पेइंग दैट लोन, देन योर फादर विल बी लायबल टू पे दैट लोन. अब फादर ने लेट्स से फॉर एग्जांपल लोन पे कर दिया आपके बिहाफ में, देन कैन द फादर आस्क मनी फ्रॉम यू? क्या बताओ, तुमने लोन लिया था 5 लाख या 10 लाख रुपए पढ़ने के लिए, तुमने नहीं पे किया, तुम्हारे वजह से मुझे पे करना पड़ रहा है, आई हैव पेड द अमाउंट, नाउ यू मस्ट पे मी बैक. कैन ही डू दैट? The answer is yes. Once the surety has paid money to the creditor, in that case, the surety will step into the shoes of the creditor and he can recover the amount from the principal debtor.
and all the collateral which were placed with the creditor will be transferred to the surety once he has paid the entire amount to the creditor. All right. I hope Priya illustration के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी दोनों क्लियर होगा. ठीक है. नेक्स्ट भाव्या ने कहा है कि सर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. एंड जानवी ने पूछा है एक और सवाल, सर इन हाउ मच टाइम शुड वी डू लीगल सेक्शन एंड हाउ मच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट बिकॉज द क्वेश्चंस आर लॉन्ग एंड समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम. अच्छा भाव्या, आपके क्वेश्चन से पहले मैं पहले जानवी का क्वेश्चन ले रहा हूँ. सी दिस क्वेश्चन इज वेरी जेनरिक एंड प्रॉब्ली आप सबके ऊपर है. टाइम मैनेजमेंट will decide and your of course your जो आपका एप्टीट्यूड है वो उसमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है. मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत लेंदी आ गया, जैसे एलिट का पेपर आया था. ठीक है. अचानक से आपने देखा कि यार कहीं सेक्शन में डिमार्केशन नहीं है, एक ही पैसेज से लॉजिकल भी है, इंग्लिश भी है, एंड ऑल ऑफ सडन आप वहाँ क्वेश्चन को देख पेपर को देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो. तो इन दैट केस क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस जो है वो और लोअर हो जाएगा. राइट. उस टाइम पे लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि यार ये पेपर डिफिकल्ट है, लेंदी है, लेकिन क्या सिर्फ पेपर मैं दे रहा हूँ, क्या सिर्फ मेरे लिए पेपर लेंदी और डिफिकल्ट है? नहीं, पेपर सबके लिए वैसा ही है. लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है, इजी है तो सबके लिए इजी है. राइट. सो पेपर देख के आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी भी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है, आप सिले मिस्टेक्स करने लगोगे. और पेपर देख के आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना है. ठीक है. एंजाइटी को कंट्रोल करना है आपको. बस उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में ही सोचना है. आपको ये नहीं सोचना कि वो मेरा ओवरऑल लीगल सेक्शन खराब हो रहा है, ओवरऑल लॉजिकल सेक्शन खराब हो रहा है. एक सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है. तो हो सकता है कि लीगल आपका उस दिन बहुत अच्छा नहीं जाए या लॉजिकल बहुत अच्छा नहीं जाए, बट डोंट वरी अबाउट इट. हो सकता है लॉजिकल उस पेपर में बहुत डिफिकल्ट है या लीगल उस पेपर में बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सिर्फ आपका खराब नहीं हुआ, सबका खराब हुआ है ना. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप जब उस टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उस पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, तो पूरी तरह से उस पैसेज पे फोकस करो, उस क्वेश्चन पे फोकस करो. ये मत देखो कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना टाइम दिया. जल्दी जल्दी सॉल्व करो, एक ब्रॉड ओवरऑल टाइम लेके चलो कि हाँ ठीक है यार इतने टाइम में मुझे कर लेना चाहिए. लेकिन अगर पेपर लेंदी है, लीगल का पेपर ही लेंदी है, तो इन दैट केस यू कांट से कि मैं यार 20 मिनट में इसको खत्म रैप अप कर दूंगा, है ना. इट मे टेक 25 मिनट्स, है ना. तो आप उस चीज पे ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि यार मैंने 15 मिनट प्री कंसीव नोशन के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में गए कि नहीं एट एनी कॉस्ट आई हैव टू कंप्लीट लीगल बाय इन 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, एंड वहां पे पेपर लेंदी आ गया, इट विल टेक 25 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स. और ये सिर्फ आपको नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है. ठीक है. तो आप उसके वजह से एंग्शियस मत होना. एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आपको उस टाइम पे पेपर देख के निकालना होगा. जीके मोरलेस 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने वाला होता है, 10 12 15 मिनट. ठीक है. मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके सॉल्व कर सकते हो, डीआई के क्वेश्चंस और ये सब. कि ऑप्शंस को जब आप पुट करोगे ना क्वेश्चन में, आई एम प्रीटी श्योर कि जिन लोगों ने मॉक अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा उनको ये आता होगा, दिस आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग. कि आपने ऑप्शंस एलिमिनेट किए और जो एक दो ऑप्शन बचे बचे हैं उसको क्वेश्चन में डाल के देखा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है नहीं, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन स्टेप वाइज. फिर दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि लीगल में स्पेशली अगर जो जाने पहचाने टॉपिक आ रहे हैं, टॉर्ट्स के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, क्रिमिनल का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, या करंट अफेयर से कुछ वैसा टॉपिक आया जो कि आपकी जो आप जानते हो पहले से, ट्राई टू सॉल्व दोस पैसेजेस फर्स्ट. देखो क्या होता है ना कि कभी कभी इंटरनेशनल लॉ से आपको क्वेश्चन आ गया या एविडेंस एक्ट से आपको कोई क्वेश्चन पैसेज दे दिया गया. नाउ इफ यू आर रीडिंग दिस जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हो सकता है कि आप उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ वहां पे, है ना. और ये पहले ही पैसेज था और आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया रेस्ट जेस्टे के पैसेज में जो आप पहली बार वहां पढ़ के समझ ही रहे हो. और जबकि लास्ट के 4 पैसेज में सिर्फ टॉट भरा हुआ था, है ना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और क्या कहते हैं न्यूसेंस था. ठीक है. बैटरी था. इस टाइप के क्वेश्चन पैसेज थे जो कि एकदम केक वॉक था. तो आपका क्या होगा कि पहले 2 3 पैसेज आप देखोगे डिफिकल्ट वाले होंगे और उसमें आप फंस के रह जाओगे. तो मेक श्योर कि लीगल में स्पेशली आप क्या करोगे कि सारे पैसेज को एक बार ऊपर से देख लेना. पैसेज एक्चुअली किस टॉपिक पे है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, टॉट पे है, क्रिमिनल पे है, और जो फेमिलियर टॉपिक है ना उसको आप पहले सॉल्व करोगे. इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो आपने तैयारी की है क्लासरूम में बैठ के मॉक सॉल्व किया, उससे जो प्रिंसिपल्स आपने सीख रखे हैं, दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दोज पैसेजेस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम.
है ना। देखो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम टेम्परामेंट का पार्ट है और ये डिसाइड करिएगा कि आप किस तरह से ज्यादा स्कोर कर सको, अपना रैंक कैसे बूस्ट कर सको। समझ रहे हो ना आप? तो इस चीज पे ध्यान देना कि जो फेमिलियर टॉपिक्स हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि यार ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको आप थोड़ा टाइम, उसको लास्ट में रखना। ठीक है। मोरलेस मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट इज अ वेरी डिसेंट टाइम। 25, हाँ मतलब, अगर आपका, इफ योर रीडिंग स्पीड इज गुड, टॉपिक्स आर फेमिलियर, दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उससे आ रहा है, तो 20 से 25 मिनट इज अ गुड टाइम। अगर थोड़ा पेपर लेंदी है, डिफिकल्ट साइड में है, तो लीगल में 25 से 30 मिनट, इन एनी केस 30 मिनट से ज्यादा आप दोगे ही नहीं। ठीक है, लीगल सेक्शन में। ये तो आपका स्कोर जो है वो दूसरे पार्ट में इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ लेट मी get down to Bhavya's question, culpable homicide and murder. See, culpable homicide and murder IPC का पार्ट है, सबको पता है, criminal law. One is given in section 299 IPC, the other one is given in section 300 IPC. Now, in generic sense, in very general broader term, कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, इंटेंशन और मर्डर के बीच में डिफरेंस है वो इंटेंशन का होता है। सारे फैकल्टीज ने आपको बताया होगा कि इंटेंशन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है मर्डर में, कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ा वीक होता है। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे सेक्शन 299 और 300, तो जो डिफरेंस है, जो क्लॉजेस भी है वो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। क्लॉज वन जो है, विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये दिस इज वेरी सिमिलर टू क्लॉज वन ऑफ सेक्शन 300, है ना। फर्स्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 जो मेंसरिया का पार्ट है। ठीक है। सेकंड भी है, विद द इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी विच कैन कॉज डेथ। अब देखो, कल्पेबल होमिसाइड में जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है विद द इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी विच मे कॉज डेथ। ठीक है, तो यहाँ मे है। जबकि जब आप 300 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 पढ़ोगे तो वहां पे ये है कि विद द इंटेंशन टू कॉज सच बॉडली इंजरी विच द डूअर, विच द पर्सन हु हैज डन इट नोज विल कॉज डेथ। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ सम रीजन दोनों के बीच में कुछ दुश्मनी हो जाती है। ठीक है। और दिस पर्सन वाज वेरी क्लोज टू द अदर पर्सन, काफी अच्छा दोस्त था, तो उसको पता था कि द अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज स्प्लीन, जो उसका लिवर है वो एनलार्ज्ड है, एंड इफ आई किक हिम हार्ड इन हिज स्टमक मे बी ही विल डाई। ठीक है। इसको एक बहुत जोर से पंच करता हूँ और ये मर जाएगा। विद दिस इंटेंशन वो कभी गया, उसको पार्किंग लॉट में मिला वो, और किसी दूसरे बात पे झगड़ा हुआ, एंड ही किक्स हिम हार्ड इन हिज स्टमक, एंड बिकॉज ऑफ दिस द अदर पर्सन डाइज। नाउ यू टेल मी कि पंचिंग समबडी इन स्टमक, क्या ये ऐसा बॉडली इंजरी है जो कि डेथ कॉज कर सकता है इन नॉर्मल कोर्स? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक? पंचिंग समबडी इन स्टमक, क्या ये नॉर्मल कोर्स में किसी नॉर्मल पर्सन का डेथ कॉज कर सकता है? The आंसर इज नो, बट इन दिस सिचुएशन इट हैज कॉस्ट डेथ, और द पर्सन हु हैज किक्ड हिम न्यू दैट दिस हिज फ्रेंड वाज सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज स्प्लीन, और अगर जब मैं इसको जोर से किक करूंगा तो ही कैन डाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, देयर वाज सम लेटेंट नॉलेज, हिडन नॉलेज दैट ही हैड, जिसको यूज करके उसने सामने वाले का डेथ कॉज किया, बॉडली इंजरी कॉज की थी जो कि डेथ कॉज किया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सो दैट इज द रीजन व्हाई ही विल बी लायबल फॉर मर्डर, नॉट कल्पेबल होमिसाइड। तीसरा क्लॉज कहता है 300 का कि कॉजिंग सच बॉडली इंजरी विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू शूट समबडी इन हेड, अगर किसी को हेडशॉट दोगे, पबजी बहुत खेलने वाले होंगे, है ना, पता है हेडशॉट लगेगा तो डेथ होगी, जबकि पैर पे लगा, हाथ पे लगा, चेस्ट पे लगा तो आदमी शायद बच भी सकता है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो बॉडली इंजरी कॉज की गई है वो सफिशिएंट होता है टू कॉज डेथ। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगेन इंटेंशन जो है वो ज्यादा ग्रेव है ना, आप ऐसा बॉडली इंजरी कॉज कर रहे हो जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सिचुएशन में ही डेथ कॉज कर दे। अनदर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी का थ्रोट ही स्लिट कर दे, तो क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में है कि उसका डेथ कॉज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? The accused had slit the throat of the victim, the deceased. In this case, what do you think, the injury which was caused, is it sufficient in ordinary course of nature to cause somebody's death? Yes or no, guys? Please write it in the comment section.
यार तुम खुद सोचो, अगर द रॉक जो है WWF रेसलर, उसका भी अगर कोई थ्रोट स्लिट करेगा तो उसकी डेथ होगी या नहीं होगी? द आंसर इज यस, है ना? किसी का हेड ही चॉप ऑफ कर दिया तो ये बॉडली इंजरी इतना ग्रेव है कि डेथ कॉज होगा, राइट? किसी के हार्ट पे शूट किया है एम करके, तो डेथ कॉज होगा, राइट? सो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में बॉडली इंजरी जो कॉज किया गया है वो डेथ कॉज करेगी। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यार मैंने ऐसे, मैं डेथ कॉज नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आई जस्ट वांटेड टू स्लिट हिज थ्रोट। नहीं, यहाँ इंटेंशन, तुम्हारा एक्ट शो कर रहा है कि यू इंटेंडेड टू कॉज हिज डेथ। ठीक है। चौथा जो क्लॉज है 300 का, 300 सब क्लॉज डी, वो ये कहता है कि डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज दैट इन ऑल लाइकलीहुड इट विल कॉज डेथ। ठीक है। यहाँ पे आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि कॉमन सेंस, जो कि नॉलेज में है कि इट विल कॉज डेथ, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल कॉज डेथ। लाइक से फॉर एग्जांपल, यू आर ऑन योर 18th बर्थडे, लेट्स से वन ऑफ योर कजन गिफ्टेड यू 9mm पिस्टल, है ना? वो गया मिर्जापुर, वहां से वो पिस्टल लेकर आया कालीन भैया के यहाँ से, और वो लाकर आपको देता है ऑन योर 18th बर्थडे। अब आप क्या करते हो कि यार हाँ, इट्स गुड पिस्टल, लेट मी सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, और आप सीधा अपने टेरेस पे चले आते हो, और सामने किसी का घर था और गोलियां चलाने लगते हो एम करके। अब घर के अंदर कोई था, किसी को लग गया, द पर्सन डाइड। इन दिस केस कैन यू से कि यार मुझे तो पता भी नहीं था कि somebody was there in the house, or the neighbor was probably a very good friend, you never intended to harm him, cause his death. Can you take this defense? The answer is no. आपका एक्ट इतना खुद में इतना ज्यादा ग्रेव है कि इन ऑल लाइकलीहुड किसी न किसी की डेथ को कॉज कर सकता था। ठीक है। या यू 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 आर देयर एट अ फोर्ट, एंड वहां से आप कैनन यूज कर देते हो, एंड वो जाके नीचे वाले विलेज में जाके गिरता है, एंड 4-5 लोगों की डेथ हो जाती है। इन दैट केस योर एक्ट इटसेल्फ इज सो ग्रेव कि इन ऑल लाइकलीहुड इट विल कॉज डेथ। तो यहाँ नॉलेज एलिमेंट है। ठीक है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि you personally intended to kill that particular person or not. Maybe you were not even aware somebody was there, or maybe the person who died was one of your good friend. But it doesn't matter if the act itself is so grave that in all possibility it will cause someone's death. So in that case, it will fall under murder. ठीक है। तो ये मर्डर के 4 क्लॉसेस होते हैं, जबकि कल्पेबल होमिसाइड में क्या है? With the intention to cause death, which is very much similar to the first clause of murder. Second one is with the intention to cause such bodily injury which may cause death, and third होता है with the intent, with the knowledge that the act may cause someone's death. तो सेकेंड और थर्ड क्लॉज में आप देख सकते हो कि सर्टेनिटी उतनी नहीं होती है ना? डेथ कॉज हो जाता है, बट एक्ट इटसेल्फ इतना ग्रेव नहीं होता है, या इतना ज्यादा इंटेंशन नहीं होता। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे जब भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है। प्लस साथ में एक और चीज होता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, एंड इस चीज को लेके भी आप कंफ्यूज होते होगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या होता है। सो व्हेन यू रीड आईपीसी, स्पेशली सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, मर्डर का डेफिनेशन दिया गया है और उसके नीचे दिया गया है 5 एक्सेप्शंस। ठीक है। और ये लिखा गया है कि अगर केस जो है इन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक में फॉल करेगा, इन दैट केस द person will not be liable for murder but will be liable for culpable homicide not amounting to murder. अब culpable homicide not amounting to murder is nothing but culpable homicide. तो सजा इसमें सेक्शन 304 पार्ट बी के अंदर ही होता है, जो कि सजा होती है कल्पेबल होमिसाइड की, है ना? समझ रहे हो आप? ये 5 एक्सेप्शन क्या है ये समझ लो। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, आई एम प्रीटी श्योर की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया होगा, के एम नानावटी, है ना? रुस्तम वाला केस सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। किन किन लोगों ने सुना है रुस्तम वाला केस? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। Please write it in the comment section. Rustam's case, KM Nanavati, grave and sudden provocation. Yes, Shruti, culpable homicide is punishable. Sindhuja, बाकी भाव्या जानवी आप लोग हो यहाँ पे? रिया, अविनाश, all of you, have you heard this case? Have you heard about this case? KM Nanavati was a state of Bombay. Rustam's case, याद होगा एक नेवल ऑफिसर होता है,
जिसकी वाइफ अडल्टस रिलेशनशिप में होती है, वो आता है, उसको पता चलता है, वो वो वेपन जाके, अपना ऑफिशियल वेपन जो है वो जाके लेता है अपने ऑफिस से, फिर थिएटर में जाता है, वापस आता है एंड देन शूट्स द पैरामोर, है ना। तो इस केस में क्या था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस उसको दिया गया था। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कोर्ट ने कहा था ना कि द प्रोवोकेशन मे बी ग्रेव बट इट वाज नॉट सडन, क्योंकि जब उसको पता चला था और जब उसने मर्डर किया था, इन दोनों के बीच में काफी टाइम था, सडन प्रोवोकेशन नहीं था। अगर वो अचानक से घर पे पहुंचता और उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अपनी वाइफ दिखती किसी और के साथ, और तब वो अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल के किसी और को उसको शूट कर देता, तब यहाँ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, उसको पता चला, वो ऑफिशियल सर्विस रिवॉल्वर जाके लेता है, जा थिएटर में जाता है, फिर वापस आकर मारता है। तो यहाँ प्रोवोकेशन मे बी ग्रेव बट इट वाज नॉट सडन, है ना। तो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है। फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपने सुना होगा, आरटीपीडी भी पढ़ा होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड प्रोपोर्शनली, इज नॉट एक्सरसाइज्ड लॉफुली। देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगर लॉफुली एक्सरसाइज हो गया तो the person will be absolved from all criminal liability, all sorts of criminal liability. But what if right to private defense is not exercised lawfully? Let's say, for example, किसी ने एक बंदे को चाटा मारा, ठीक है, और सामने वाले बंदे ने, और पब्लिकली मारा सबके सामने. Now, in this case, if the other person had weapon and he uses his weapon to shoot the other person, he shoots the other person and kills him. Can he use right to private defense? दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, स्वॉन एनिमीज थे, ए ने बी को पब्लिकली स्लैप किया 100 लोगों के सामने, उसके अपने परिवार वालों के सामने. बी हैड वेपन, है ना, ही हैड अ गन विद हिम एंड ही शूट्स हिम. नाउ बी इज सेइंग कि ए जो है वो, उसने मुझे स्लैप किया और तब मैंने उसको शूट कर दिया, एंड देयरफॉर आई एक्सरसाइज्ड माय राइट अंडर सेक्शन 96 of IPC, that is right to private defense. Can he plead this? आपको लग रहा है कि यहाँ राइट टू प्राइवेट डिफेंस है? अच्छा, क्यों नहीं है राइट टू प्राइवेट डिफेंस? प्लीज राइट योर रीजनिंग ऑल्सो. श्रुति, सिंधुजा, भाव्या, जानवी, please write your reasoning also why in this case it cannot be considered as right to private defense. All of you are right, but what is the reasoning? क्या प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से है कि the force used was not proportional? Is this the answer? Well, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, आपने एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, वेयर अ डॉग वाज बार्किंग ऑन 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 अ पर्सन, और जब वो बार्क करना बंद कर देता है, तब वो बंदा जो है ना अपना वेपन निकाल के, और जब वो डॉग जा रहा होता है तब उसको शूट कर देता है. ठीक है, क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस था? यहाँ राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं था, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं था. ठीक है, इस केस में क्या हुआ है कि एक बंदे ने स्लैप ऑलरेडी कर दिया है, तो जो एक्ट उसको करना था वो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, अब वो अगर सामने से शूट कर रहा है तो क्या वो डिफेंसिव एक्ट है या ही वांट्स टू पनिश द अदर पर्सन? तो व्हाट इज द रीजनिंग है? क्या प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा और द एक्ट ऑफ द अदर पर्सन इज एन एग्रेसिव एक्ट? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स? In this case, when a person has slapped the other person, और उसके बाद वो अपना बंदूक निकाल के सामने वाले को शूट कर रहा है, तो क्या ये अग्रेसिव एक्ट है, जो सामने वाला जो शूटिंग वाला एक्ट है, या ही हैज डिसप्रोपोर्शनेटली एक्सरसाइज्ड हिज राइट? इट्स एन एग्रेसिव एक्ट, यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है. अगर मान लो एक बार उसने स्लैप किया और दोबारा वो उसको स्लैप करने जा रहा है, और तब वो उसको पकड़ के उसको हटाता है और शूट करता है कि दिस पर्सन वांट्स टू किल मी एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज शूटिंग मी. ठीक है, या ही वांट्स टू हार्म मी. एक बार मारा, फिर दोबारा वो फिर से मारने आ रहा है, एंड देन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शूट कर दे रहा है उसको. तो इन दिस केस द एक्ट, हिज एक्ट इज a defensive act, but the act which is, but the proportionality of that act is not equal. समझ रहे हो आप? तो यहाँ नॉन प्रोपोर्शनल एक्ट है. क्लियर? तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर
the other person, the one who had slapped him, dies, ठीक है, तो person B will not be liable for murder, but he'll be liable for culpable homicide not amounting to murder. क्यों? क्योंकि उसका जो एक्ट है वो मर्डर के अंदर तो आ रहा है, लेकिन उस वन ऑफ द एक्सेप्शन जो है, right to private defense not exercised lawfully, उसके अंदर भी आ रहा है, and therefore his liability will be reduced, and now he'll be liable for culpable homicide not amounting to murder. Clear? ठीक है, तो इस तरह से 5 एक्सेप्शन है. कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है, who is an adult, not below the age of 18, ठीक है. सिमिलरली एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, सडन फाइट है. ये 5 एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 300 में दिया गया है, जो कि मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट करता है. क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव गाइस? एनी टॉपिक जो आपको अभी लग रहा है कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है मेरा, and it may come in the exam, feel free to ask anything guys. I'm here to help you out. I want all of you to perform well. बहुत सारे स्टूडेंट्स हो मेरे कॉलेज भी जाएंगे GNLU, so if you get into GNLU please stay in touch with me, right? Or for that matter any other national or university. In case if you have any doubt after the exam also, you can contact Clat Possible. You can write to us. You can also DM us on Instagram. Instagram पे आप DM करो, within 24 hours will help you out. ठीक है, the experts at Clat Possible, कोई भी डाउट है आपका, मैथ से है, DI से है, लॉजिकल से है, इंग्लिश से, कोई भी आपका डाउट है, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, जाके DM करो, and within 24 hours our experts will reply back to you. ठीक है. Shruti Singh has asked me to explain right to privacy. Anyone in class who can tell me right to privacy constitution के कौन सा आर्टिकल से आया है और कौन सा लैंडमार्क केस है जिसमें right to privacy को फंडामेंटल राइट कहा गया है? Instagram ID, all right, I'm just writing it. Clat Possible official. Yes, Sindhuja, you are absolutely right. It's Puttaswamy versus Union of India. Justice Puttaswamy versus Union of India. He was a retired High Court judge जिन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, आधार को लेके एक केस था, क्योंकि जब आधार आया था तो ये कहा जा रहा था कि बायोमेट्रिक और ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट कलेक्ट करी है तो हमारा कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, राइट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गिवन इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. However, just like any other right, it will have reasonable restrictions. The government can impose reasonable restrictions. So right to privacy, is it an absolute right? Guys, I've asked you one question. Right to privacy, is it an absolute right? Come on, answer it यार. अभी मैंने बताया right to privacy absolute right है या उसमें reasonable restriction impose कर सकते हैं? The answer is yes. Reasonable restrictions impose हो सकता है. So right to privacy can be curtailed when it comes to national security, when it comes to integrity of our country. या right to privacy जो है वो अगर criminal investigation है उस केस में curtail किया जा सकता है. ठीक है. राइट टू प्राइवेसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है. अभी आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस मर्डर केस हुआ था दिल्ली में. एक कपल था जो लिव इन रिलेशनशिप में था. याद है आपको कौन सा केस है? एनीवन इन क्लास? बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको हाईलाइट किया था. टेल मी द नेम ऑफ द केस. कौन सा मर्डर केस था अभी जो दिल्ली में हुआ था? आध्यान, राइट इट. सो उस केस का जो अक्यूज है, मैं अभी उस अक्यूज का नाम नहीं बता रहा. यस अनमोल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो अक्यूज है उसको अभी नार्को एनालिसिस के लिए भेजा गया था. ठीक है, ब्रेन मैपिंग एंड नार्को एनालिसिस जो है ना, उन सारे टेस्ट उसके ऊपर किया गया था.
So again, narco analysis, is it permittable? Is it permissible under law? Narco analysis test. आप सबको पता है narco analysis क्या होता है? Yes, Priya, Nilansh, you are absolutely right. आफ्ताब and Shraddha's case. नार्को एनालिसिस पता है आपको? आफ्ताब का भी नार्को एनालिसिस हुआ था, ठीक है? आफ्ताब पूना वाला, एग्जैक्टली। नार्को एनालिसिस जो है वो फॉर सीरम टेस्ट होता है। नार्को एनालिसिस होता है जहाँ पे एक्यूज को सर्टेन सेडेटिव मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है एंड डॉक्टर्स एनालाइज करते हैं उसके रिस्पॉन्स को। ना ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कोई केमिकल आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है तो वो आपके प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, राइट? तो क्या ये इस टाइप के एक्ट्स को किया जा सकता है? Is it lawful to conduct narco analysis, brain mapping? Yes or no? The answer is yes, it is lawful. It is lawful provided the consent, the free consent of the accused has been obtained. तो अगर accused अपना free consent दे रहा है तभी जाके narco analysis और brain mapping हो सकता है. Otherwise, it will violate Article 21 of the Constitution and one more article. कौन सा article है वो? Anyone in class? जानवी, come on, tell me the answer. Article 21 तो वायलेट होगा और दूसरा कौन सा वायलेट हो सकता है? कौन सा वायलेट होगा? See, if narco analysis or brain mapping is conducted without the consent of the accused, then Article 21 will be violated and Article 124 is different. Article 124 talks about setting up of the Supreme Court. There shall be the Supreme Court of India. Article 124 is fair. ठीक है? Article 20 subclause. Come on. Article 20 आपको याद है? Article 20 में 3 important clause हैं. Article 20 subclause 1 talks about Article 20 subclause 1. Come on यार, बताओ, ये सब तो याद होना चाहिए सबको. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पता है आपको कि एक क्रिमिनल लॉ जो है वो पोस्ट जिस दिन आया है उसी दिन से एप्लीकेबल होगा, उसके प्रीवियस डेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा. दूसरा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 होता है डबल जेओपार्डी, कि अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड, प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम ओनली वंस, है ना, कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस, जो होता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2. एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना. सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर लॉ का मतलब क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. ठीक है? तो लॉ ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन को सारे एविडेंसेस लाने होंगे और जो अक्यूज्ड है उसके गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा. ठीक है? देयरफॉर अ पर्सन, द अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. उससे आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि तुम कन्फेस करो. तो जो नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है, अगर इसको हम जबरदस्ती अक्यूज के ऊपर कंडक्ट कराएंगे तो वी आर कंपेलिंग हिम टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, है ना, बाय गिविंग हिम दीज केमिकल्स. तो क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो. It will violate Article 20 subclause 3 of the Constitution, which is right against self-incrimination. तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा था क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में था. अब लास्ट 1 महीने पहले का ही न्यूज था कि आफ्ताब पूना वालों को ने कंसर्न दिया था नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के लिए. कोर्ट ने उसको अलाउ किया और उसका नार्को एंड ब्रेन मैपिंग हुआ था. तो इससे आपको एक पैसेज मिल सकता है. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू हैव? Guys, any other question? Shall we end this class? किसी का कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, otherwise we'll end this session. Anyone? All right, guys. So very soon we all will again meet up, and in our next session I will go through the remaining questions. जो important topics हैं जो already आ चुके हैं
I'll discuss passages from last 3 years and hope to see you soon. In case if you have any doubt, please DM us on Instagram. ठीक है, हमारा टेलीग्राम आईडी, wait a minute, I'll give it to you. Guys, it is Clat Possible official. I'm just writing a telegram. ठीक है, इंस्टाग्राम का भी सेम है, क्लैट पॉसिबल ऑफिशियल, और टेलीग्राम का भी सेम है. अगर कोई भी डाउट है कहीं पे भी आपको लग रहा है किसी भी सेक्शन में, प्लीज राइट इट, डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, विद इन 24 hours we'll get it resolved. And very soon we'll catch up again. Maybe tomorrow or day after tomorrow we'll have another session and we'll discuss all the questions. आप अपने doubts को भी एक साथ compile करके रखना, उस क्लास में आप मुझसे पूछना, and I'll answer all the questions in legal section. All right. Thank you so much for your patience, guys. See you soon. Have a nice day.